You will get demotivated. It's a part and parcel of being an artist. Matlab, my life is not all. I've received 90 no's for every 10 years. सो टीम, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशंस। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है हमारे मिस्टर विनय कुमार सर, जो कि एक आर्किटेक्चर फोटोग्राफर है। उनके बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी बताने लायक है, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि वो अपनी कहानी खुद बताएं। सो थैंक यू सो मच विनय कुमार सर फॉर एक्सेप्टिंग एज अ गेस्ट, जो हमारा अपने हमने आपको रिक्वेस्ट किया था गेस्ट आने के लिए। एंड डेफिनेटली वी विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन टुडेस पॉडकास्ट विद यू। सो विनय जी, आप मुझे बताइए आज आप कैसे हो? आपका शूट कहाँ पे चल रहा है, क्या है? Currently, little under the weather because I'm an interior architecture photographer, so I shoot for hotels. ओके। तो अभी जैसे वेदर चल रहा है, अंदर बाहर एसी के अंदर हम लोग शूट करते हैं, फिर बाद में बाहर आर्किटेक्चर शूट करते हैं धूप में, वापस से बारिश होता है. This करेक्ट। time, this season, it's taken a toll. ओके So ओके। it's सो been बहुत ज्यादा आपका अलग अलग एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है, राइट? होता रहता है. इसके लिए प्रॉब्लम तो आ ही जाता है. So राइट। you get exposed to the heat, you get exposed to the cold, you get exposed to the rain, करेक्ट करेक्ट। and then you're editing in the studio, which is again air conditioned. Then again you run off to a site which is at 12 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in राइट। the evening for a shot to happen. So sometimes yeah, I'm getting old. सफेद बाल भी आते आ रहे हैं और थोड़ा वेदर की वजह से अभी हालत डाउन है. नहीं सर, ऐसे मत कहिए। आप ऑलरेडी क्वाइट यंग हो, बिकॉज मुझे भी अंकल बोलने लग चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली। सो विनय सर, आपसे मुझे ये जानना है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे ऑडियंसेस भी जानना चाहते हैं कि आपने ये फोटोग्राफी करियर क्यों चॉइस किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे आपके लाइफ में जहाँ पर एक आपको अंडरस्टैंडिंग आती है कि यस मुझे सिर्फ यही करना है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग रास्ते यूज करके चलते हैं वहां पर और लास्ट में फोटोग्राफी तक आते हैं। सो आपकी जर्नी कैसे थी? There's a very small thin line between dedication and passion. ओके। Or if you cross that, you call it madness. करेक्ट सर। So it starts off. I was in a hostel which had about 110 acres of forest, ओके and ओके I got access to a camera, and it had a defunct photography lab. ओके So from ओके। there on, experimenting, I landed up shooting. So no one taught me darkroom processes, no one taught me photography. It was राइट। all, I'm talking in the 95, 1995. 1995 का टाइम, उस वक्त So तो फिल्म digital फोटोग्राफी ज्यादा camera, चलती थी। no digital camera, nothing digital, no internet. I mean, करेक्ट। if I talk to kids today and say that, you know what, I've seen life before internet when getting access to information was difficult, and they are just shocked to know that, अच्छा आप internet के पहले born हो. करेक्ट तो information कैसे कैसे लेते थे? बोला कुछ idea नहीं होता था. तो we करेक्ट। used to, it was more like a hobby. I started when I was maybe 10 year old. ओके By the ओके। time I was 14, I could develop a black and shoot in black and white, develop a black and white, print in a large scale black and white. So that 4 years in the lab, it was just pure experimentation. And at that time, I didn't look at experimentation. That time, I was just looking at, okay, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ develop करेक्ट हो रहा है. So to get my first frame, I must have, thankfully, my father has been very kind. I mean, it was an expensive hobby then. It's still an expensive hobby now. So at least I करेक्ट। must have gone through, I don't know, at least 40, 50 rolls to get my first correct exposure. 40 From 50। shooting rolls. And one roll, matlab 36 frames. करेक्ट। तो 36 into 5 अगर मैं करता हूँ तो इतने सारे अपने इमेजेस कैप्चर किए थे, एंड तब जाके वो I एक could प्रॉपर एक्सपोजर understand, में आया। I could understand aperture क्या करता है, shutter speed क्या करता है, ISO होता राइट। क्या है. राइट। डिफंक्ट लैब है तो कोई है नहीं आस पास आपके कोई बताने के लिए करेक्ट ये होता. करेक्ट। तो फिर और एंड उस पता भी नहीं, वक्त। कभी कभी ISO 100 के रोल्स मिलते थे, कभी कभी 400 के रोल मिलते थे, तो फिर जो भी एक्सपेरिमेंट यस। 100 पे करता था फिर 400 पे जाता था, बोलता यार ये क्या हो गया है. And जी जी। you're talking to a 12-year-old kid who doesn't understand what is happening. And to करेक्ट। complicate things, since it was in my hostel, I couldn't go to a lab and say इसको प्रोसेस कर दो. ओके। प्रोसेस भी तुम्हें खुद करना पड़ता था. तो फिल्म को लाइट में कैसे एक्सपोज नहीं करना, उसके लिए क्या क्या जुगाड़ निकाला है वो मुझे ही मालूम है. बेडशीट के ऊपर, धोई बंडल के नीचे, रात के 12 बजे जंगल के बीच में जाके बोलो अभी तो शायद एक्सपोज नहीं होगा. मतलब राइट। ऐसे चीजें की है कि मैं भी कुछ हैरान था. बोला यार सोल्यूशन वाज वेरी सिंपल बट आई डिडंट थिंक ऑफ इट.
राइट, तो इट टुक मी अबाउट 4 years टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट ऐसे शूट करूंगा, ये एपर्चर पे शूट करूंगा, ये ऐसो पे रहेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा ठीक ठाक। और उसके बीच में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था कि वो कैमरा का शटर अटक जाता था। मैनुअल इट वाजंट, कैमरास होते थे। हाँ, हाँ, मैनुअल कैमरास। राइट, सो द शटर यूज्ड टू गेट स्टक, सम शटर स्पीड्स नॉट यूज्ड टू वर्क, एंड देन लेटर ऑन आई फाउंड आउट वो शटर स्पीड का वो खराब ही था, तो कंसिस्टेंसी नहीं था उसका। तो राइट, मतलब ऐसे बोला यार कैसे सीखा मेरे को भी पता नहीं, लेकिन सीख गया। इसके लिए मेरे को एग्जैक्टली, पहला एक्सपोजर क्रिएट, मतलब जस्ट शूट फ्रॉम वन, डेवलप इट, करेक्ट, प्रोसेस द नेगेटिव एंड प्रिंट इट, 4 साल करेक्ट। लगे। 4 साल लेकिन लगे समझने के लिए कि बेसिक समझने प्रोसेस के क्या लिए, है। लेकिन आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, बिकॉज वो जो 4 साल में मैंने इतना एक्सपेरिमेंटेशन किया आउट ऑफ प्योर क्यूरियोसिटी, राइट, that all the concepts later when I went to a photo school, or later when a digital camera came, हाँ ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होता है, टर 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 टर, एकदम राइट, just started to flow in place. So राइट, that practice was very important. And secondly, what used to happen is that how I got into architecture or interior was, when you're in a hostel, you have 110 acres of forest. You all the time you're shooting nature. So you're shooting early morning sunrise, late evening sunsets, different same location, different sunsets. How the light is playing onto it. So that's what got me interested into photography, was the basic, like how you could capture nature, how you could see things around you through a camera. राइट, राइट, Fortunately or unfortunately, the only way I found out later on, the only way I could make money out of photograph was nature photography didn't pay you too much. नेचर फोटोग्राफी। क्या करोगे, मतलब कौन खरीदेगा तुम्हारा प्रिंट्स? एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि उस चीज से पैसे कैसे कमाया जाए, एंड वहां पर See, डिफिकल्टीज uh, आती है। it took me a little while to understand what is your passion and how you can convert that into your business. करेक्ट सर, राइट, There's a big jump from that. You might like something, but if you cannot make money out of it, then how do you go about it? I like nature, to shoot nature, but I found it very difficult to make money out of it. I'm not saying it's not impossible, but I just find it very difficult. Where do I start? If you tell me I have to do wildlife, nature के बाद the wildlife is probably the most sellable stream of जॉनर photography in जिसको terms कह सकते हैं उन लोग। when you compare to nature or wildlife. I mean, you're more likely to find revenue stream in a wildlife. But then wildlife ke liye bhi revenue stream. That means I have to go on safari, I have to rent out a jeep. All those things add up, and they करेक्ट, are not by cheap any chance. So by the time you've completed one safari, you've gotten some images. यस, You try to sell them करेक्ट, to any of those magazines. By the way, my wife works in Sanctuary Asia. That's a wildlife magazine, but that's not how I met her. That's for another story. But I can ask her that, if I shoot some wildlife and I give you those pictures, how much will you pay me? And she was like, no, and her answer was very simple. We have tons and tons of database. Why should I pay you if somebody is giving me for free? There'll be यस, someone from Bangalore who works in IT industry, and he must be having extra income or loads of cash, and takes up photography as a hobby. He buys the most expensive lenses. He goes and shoots. And when he gives the करेक्ट, picture, the sanctuary says, okay, I will not. Now, let's just not take names. Any wildlife magazine says, I'm getting one picture for free. And here's करेक्ट, one guy who's asking me to charge for his image. Why won't I राइट, take the free image? So it was not a revenue stream which I could manage in terms of करेक्ट, photography. All those guys who are wildlife photographers, they're actually, in first place, they're conservation. They're into conservation. They are into ओके, saving wildlife one another. Photography happens to be the second passion for them. करेक्ट, करेक्ट, That may or may not make money, it doesn't matter to them. The first one is conservation. From there, the livelihood कंजर्वेशन, comes. Yeah. ओके, You as a photographer, you're making money from photography. And wildlife, I would be honest, it doesn't pay you much. And after years and years of practice, maybe करेक्ट, somebody will start paying you. But then what happens to the initial part where you can't generate revenue? करेक्ट, एंड सर्वाइवल बिकम्स टू डिफिकल्ट दैट पर्टिकुलर टाइम इफ यू Yeah. डोंट हैव द So बैकअप। absolutely. So somewhere down the line, you have to realize that, I like something. So take my example, giving my own example. I like nature photography. I have studied nature photography in the start of my career, start of my photography passion, which I could say almost for 8 to 10 years, I was just shooting nature. Now, ओके, in that 8 to 10 years, 4 years went in understanding how the camera works, how the rules are developed, करेक्ट, what the experts
is, what is the ISO shutter, all those things. Mhm. And along with that, I was also studying light, Okay, okay. how the light falls on nature, how the shadows are created. Now, this is something comes by experience. Now, you have to understand there is photography is a lot of repeated process where you can say one part is your technical aspect, the Mhm. second part is your skill aspect. Now, skill Correct. aspect is how do you read the light, how do you process the image. Yes. So the skill aspect was slowly developing, but I didn't know where to use that skill. करेक्ट, साइड बाय साइड वो स्किल डेवलप हो रहा था, बट उसको डेवलप हो रहा यूज था कैसे लेकिन करना है? कैसे कर रहा हूँ मैं वो समझ में नहीं आ रहा था. I can look at a scenery and come out here and say that, you know what, this looks like a good scenery, this looks like a good frame. Maybe if I wait 2 hours, I'll get a good sunlight out here if there are no clouds. करेक्ट. This knowledge I could ओके. develop. I could develop this knowledge फैंटास्टिक. saying that नहीं यार ये स्पॉट अच्छा लग रहा है, इधर से फोटो लेते हैं लेकिन 2 घंटा रुक जा, या मे बी कल सुबह का शॉट लेते हैं, या मे बी आज रात का शॉट लेते हैं, या आई थिंक द मून इज गोना राइज फ्रॉम दैट डायरेक्शन, वी माइट गेट अ नाइट शॉट आल्सो. All एग्जैक्टली. those things I could calculate, but I was calculating on a subject or on a topic which is nature, which doesn't give me a revenue stream. ओके, ओके. Can you give me, if I take a picture of something with a good landscape, and I walk up to you and I say, you know what, give me 30,000 rupees for it. How many वेरी people do you think डिफिकल्ट. I have to approach? How many people do I have to approach to get बिकॉज that 1,000? करेक्ट विनय सर, बिकॉज मैं भी खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो जैसे आपने बताया, आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द नेचर एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाने के बावजूद बहुत कम परसेंटेज है, एक या दो लोग रहेंगे वो आपको पे कर सकते हैं, लेकिन वो भी श्योरिटी नहीं है. तो उसकी वजह से होता क्या Absolutely, है कि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते. वो एक चीज होती absolutely. है. Think about doing this 12 times in a year, every month. Repeat the same process. यस. बट वो So फिर ना what happens? पॉसिबल नहीं हो पाता ना कई बार, क्योंकि Yes, आपका सर्वाइवल से. that's where your passion does drop down, and that's where you're like, यार, इसको career कैसे बनाऊं? So the next best thing I found out was, yeah, if I forget about nature, I mean not forget about nature, but just put nature in the background a little bit, and foreground I can put something which can generate revenue, which naturally came was architecture. करेक्ट. सो आपने बेसिकली दिमाग में ये सोचा था कि लाइक बैकग्राउंड नेचर रहेगा एंड आपका जो फोरग्राउंड है आपका बेसिकली कुछ ऐसी चीज जो रहे वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे, एंड देन Something वो like that. जॉनर That's आइडेंटिफाइड हुआ. from there I got introduced to architecture photography, and I said, hey, I can make money out of here. Photography still continues. My previous learnings, which I've been self-taught and experienced by myself, can come in handy. So architecture was the next progression for me from there on. तो ये देन यू डिसाइडेड यू हैव टू डू एन आर्किटेक्चर शूट, आपको वो सारी चीजें आर्किटेक्चर के रिलेटेड ही करनी है, You राइट? it, it, it wasn't exactly saying that abhi when I turned 20 and I said मेरे को architecture बनना है, architecture करेक्ट. photographer बनना है. I said, okay, let me see if it works, it doesn't work, what are the principles. So then I had to relearn architecture. एग्जैक्टली. What is the correct perspective of a building? Now we use the word perspective very loosely. So what is the correct perspective of a building? What you would like to shoot as 1 point, 2 point, or a 3 point perspective? So all those राइट. things I had to study, and that honestly wasn't very much because 90% of my job was already done in terms of studying how you light up. Because nature lights itself up. The sun as a main light source. How does everything else around it gets light up? So based on that, by the time I was 23, 24, I said, okay, I can survive in architecture. तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वर्ड यूज किया 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. हमारी जो व्यूवर्स है बेसिकली उनको थोड़ा सा अगर बताना होगा तो आप शॉर्ट में बता सकते हो वो क्या होता है एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे I'll say फोटोग्राफर्स just read बेसिकली इसको about it. देखने वाले हैं. I'll say read about it. It's technical sketching. ओके. It's technical drawing, and you ask any architect what is perspective, so they'll uh, very simply put it. Abhi aap you're seeing things in 3 dimension. ओके. That means I have depth, I have height, and I have width. विड्थ. करेक्ट. But when I'm looking at you on the screen, it's a two-dimensional. एग्जैक्टली 2D इमेज आपको दिखाई दे रहा है मेरे. So perspective is nothing but drawing your three-dimensional object onto a two-dimensional surface while keeping the ratios same. मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि आप तो 2D ये स्क्रीन ड्राइंग पे के 3D नहीं या दिखाना चाहते हो. yeah, without slides it's a little difficult to explain with hands and words. करेक्ट. नहीं लेकिन बेसिकली थोड़ा सा जजमेंट आ चुका होगा हमारे ऑडियंसेस को भी, बिकॉज
जब आप किसी भी चीज को देखते हो तो हमारी आंखें उसको 3D में देखना पसंद करती है और उसको समझती है, बट जब आप 2D पे और आप देखते हो। फोकस है 2D में। सो आपको करेक्ट। 3D से 2D कैसे आप ड्रॉ करते हो विद कीपिंग करेक्ट। द पर्सपेक्टिव द सेम। दैट मींस सपोज इफ यू आर सीइंग मी आउट हियर एंड देयर इज समवन स्टैंडिंग बिहाइंड मी, उसका भी करेक्ट। फेस मेरे जितना बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? छोटा आप आपके पीछे है तो डेफिनेटली थोड़ा छोटा रहेगा। बिकॉज छोटा रहेगा। उसके जी, पीछे भी और कोई रहेगा तो और छोटा होगा। छोटा होगा। करेक्ट। उसके भी पीछे और छोटा रहेगा। बट नाउ करेक्ट। व्हाट हैपेंस इफ आई टेल यू दैट ही इज एक्चुअली 5 meters behind me? सो आप उसका करेक्ट। फेस कैसे ड्रॉ करोगे? एग्जैक्टली। डिफिकल्ट अंदाज टास्क है से। बहुत ज्यादा। अंदाज से। थोड़ा सा छोटा ही करना पड़ेगा, बिकॉज अगर 5 मीटर है तो कितना छोटा होता है एक रेशियो So कैलकुलेट you're करने के taking a बाद। judgment. You're taking a judgment राइट। out here, na? You can't be करेक्ट। accurate. But if you understand perspective, you can be accurate. करेक्ट। करेक्ट। So that's what perspective helps you. So the whole art of drawing it, you'll understand how to capture it. करेक्ट। सो जब आप ये पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे 4 साल 5 साल, फिर आप 20 के एज तक पहुंचे, उस वक्त आपकी फैमिली का बैकग्राउंड टेक क्या था? बिकॉज अभी होता क्या है, या अभी पहले भी जो फोटोग्राफर बने हैं, फैमिलीज बहुत ज्यादा उनको पता नहीं होता कि एक आर्ट फील्ड में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट फैमिली से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप एक काम करो, नॉर्मल रेगुलर जॉब करो 9 to 5 वाला। ये फोटोग्राफी, ये आर्ट, ये बाकी के सारी जो अलग अलग क्रिएटिव प्रकार के करियर्स हैं, यहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता ज्यादा बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को जब वो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं। तो आपका बेसिकली जो फैमिली ना टेक था कि आपने जब उनको कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, उस वक्त बेसिकली क्या सिचुएशन थी और आपने उसको कैसे संभाला? Situation was very simple. They already saw me at the age of 10 getting into photography. ओके, Either बट you कहीं call ना it कहीं। addiction or call it madness. Very thin line. राइट। करेक्ट। So they already had an inclination that he's going to pull the trigger somewhere or the other. बोलेगा मुझे photographer बनना है. राइट। So my parents were very supportive. My dad's an engineer. My mother is a doctor. In my family, you'll only find engineers and doctors. एंड आप वहाँ पे फोटोग्राफी के करियर में जाना चाहते I'm the थे। black sheep of the family, or the white sheep of the family, or the donkey of my family, whichever you call it. राइट। सो बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार की सिचुएशन थी वो उस वक्त। And mom and dad they were pretty supportive. There's like, if you know what you're doing, just go for it. So एग्जैक्टली। I just told them that okay, there is a photo school I want to join, and I joined a photo school. From there on, I said okay, I want to assist someone for architecture. ओके। Uh, Going into a photo school, whatever I learned out there, it gave me a structure to what I already knew, which was in a completely jumbled manner, which I had processed as a kid. करेक्ट, मीन्स जो भी आपने लर्निंग्स पहले की थी खुद की सेल्फ लर्निंग से, एंड जब आप वहां Yeah. पर गए तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज मैनर में आपको सीखने के लिए मिला, राइट? It was relearning it for me. Matlab, I picked it up on very fast because all those things I had done it manually without anybody telling me. But now राइट। there was a structure. But करेक्ट। photo schools will come up to that point only where they will teach you a theory, where they'll give you all the information you require. But beyond that, there is a skill set which you need to develop yourself. यस। And that करेक्ट। skill set is, it could be processing, it could be how do you handle your colors, it could be how do you study light, and how do you frame. Now, this is करेक्ट। something so basic that you have to keep repeating on it till it becomes your style. एग्जैक्टली। एंड इट टेक्स टाइम्स, अ लॉट ऑफ टाइम वो रिक्वायर्ड होता है एक स्टाइल आपका जो क्रिएट होने के लिए। Absolutely. I mean, first portfolio of my architecture, if I see, I will not be happy, and I'll be like, यार ये कैसे मैंने shoot कर लिया अभी. Secondly, if I'm at this level and I had not seen my initial portfolio, somebody comes in to me and says that, you know what, I want to become an architecture photographer and this is my photo. मैं उसको देख के बोलता था, you may not have it in you. ओके, मैं उसको आपको बोलता था, तेरे बाकी के लोग को बोल टैलेंट नहीं सकते थे। रहेगा यार, ऐसा लग रहा नहीं तू आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर सकता. मैं अपना खुद का करेक्ट। पोर्टफोलियो देखता था. तो राइट, हाउ होता है डू यू वो। ग्रो एज अ फोटोग्राफर, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू. सो आई नेवर डिस्करेज एनीवन सेइंग दैट नहीं होगा आपसे. लेकिन ये मान के चलो क्या करना है. क्या करना है. One important point I would definitely stress is that you have to keep practicing. That means the more chance you get to shoot, you don't look at the theory part. You know, it's been ages since I've decided what should be my f number, or what should be my shutter speed, or what should be my ISO. That's the last thing going in my head. I करेक्ट। teach in करेक्ट। some photo schools, and my first thing to them is, all my students, when I do land up teaching, I said I'm not going to speak in aperture, I'm not going to speak in shutter speed, I'm not going to speak in ISO.
वो सब आपके बेसिक्स में होता है, वो मैं भूल गया हूँ अभी, और मुझे मेरे को करेक्ट। याद भी नहीं करना, और मैं आपको उसके क्वेश्चंस या मैं उसके सवाल पूछूंगा भी नहीं. वी आर टॉकिंग एवरीथिंग अदर देन द कैमरा सेटिंग्स. करेक्ट, To बिकॉज वो be a स्किल professional, सेट है। that's a skill set I would like to teach, and that's a skill set I would like those guys who are getting into photography to develop. Aperture, ISO, shutter, ये हो गया, सबको पता है. इसके आगे क्या था? एग्जैक्ट, वहां पे एक्चुअल में जर्नी जो आपकी वो स्टार्ट होती है। एंड That is वहां पर जी जी बोलिए सर। no, no, that is completely true. That your journey starts once you have understood the camera, and mastering the camera is no rocket science. एग्जैक्टली, एंड नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मैनुअल, लेकिन जो कि ज्यादा तो स्टूडेंट या बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं। सो मैनुअल अगर आप ढंग से पढ़ भी लोगे तो भी डेफिनेटली आप आपके कैमरा के रिलेटेड बहुत कुछ जानना चालू कर देते हैं। आपकी I स्माइल have बता रही है never read, सर। I've never read a camera manual because I never got a chance to read a camera manual, and I got a camera which had a faulty shutter speed. So you can imagine the एग्जैक्टली सर, learning बिकॉज curve I had to go. करेक्ट, बिकॉज उस वक्त में एक्चुअल में वो ना इतने रिसोर्सेस अवेलेबल भी नहीं थे सर। आज अगर मुझे कोई डिफिकल्टी आती है किसी डिजिटल कैमरा के रिलेटेड, आई कैन सिंपली गो ऑन अ कंपनी वेबसाइट, आई कैन गो ओपन अ मॉडल नंबर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। उस वक्त नहीं था, एंड दैट टाइम फोटोग्राफी वाज टू डिफिकल्ट टू लर्न एक्चुअल में। It was, and it's not difficult now. I think it's become even more easier. नाउ इट्स इजियर, दैट टाइम मतलब एक 1995 का मैं अगर टाइम लेता हूँ या 1990 के टाइम पे जो सीख रहे थे, जिन्होंने मैनुअल एक्सपोजर फिल्म के ऊपर सीखा हुआ है, उस वक्त हाँ, डिफिकल्ट था? आपको लगता है उस वक्त ज्यादा डिफिकल्ट था या अभी बहुत. ज्यादा डिफिकल्ट है? At that time, it was extremely difficult, I would say, because if you didn't have करेक्ट। a teacher and you have every equipment kept in front of you, that was very difficult to decode it. करेक्ट, क्योंकि उस वक्त Because रिसोर्सेस there is नहीं थे no उतने सारे। resources nahi the, and then whatever you shoot, करेक्ट। you can't see it instantly. वो एक You सबसे had बड़ा to पॉइंट है। finish the 36 frames, करेक्ट। process it, and then see it. And knowing the fact that you have limited number of rolls, मैं करेक्ट, एक रोल शायद एक हफ्ते में शूट करता था, क्योंकि मैं एक रोल सोचता एक था हफ्ते पहले में? यार ये, या 136 frames in a week I used to take, or maybe more, एंड उस वक्त because रोल की कॉस्टिंग one भी roll बहुत was ज्यादा very थी। precious. Yeah, and one roll was very precious. करेक्ट। मतलब is it worth to take a photo of this picture? नहीं, मैं 2 घंटा रुकता हूँ, अरे मिस हो गया, चलता है, एक्चुअली कल मैं 4:30 1 घंटा पहले आके ट्राई करूँ, और अभी एग्जैक्टली। तक फ्रेम. So this was करेक्ट। because the role was such a precious resource for you. You actually became very choosy on what you wanted to shoot and when you wanted to shoot. That was my study, which I realized it later. करेक्ट, एग्जैक्टली सर। So it was a very tedious way to learn because there were a lot of times you were frustrated. बोला यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, and then you used to राइट। you don't see the camera for 4-5 days. Then let's say एक काम करते हैं, अभी बोर मार रहा है, ट्राई तो करते हैं, रोज तो उधर जाते हैं, आज वापस से बैठ जाते हैं उधर, चलो देखते हैं क्या होता एग्जैक्टली। है. 4-5 दिन बट का ब्रेक ले लेता था मैं बोला नहीं करना है यार, मन उड़ गया मेरा इससे. करेक्ट, नहीं सर, एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज उस वक्त उस 36 फ्रेम्स की जो एक्चुअल वैल्यू वो हमको पता थी। एंड अभी के टाइम पे अगर देखे जाए तो हम लोग कब तक तीन अभी तो हजार छह दो सौ सेकंड में इमेजेस भी क्लिक करते हैं। कैमरा ले लेंगे. कोई एग्जैक्टली। कोई कैमरा तो 1 सेकंड में ले लेंगे उतना. करेक्ट। एंड अभी उल्टा और ज़्यादा एक हो गया, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा अलग अलग बच्चों से इंटरेक्शन करता रहता हूँ। सो एक मतलब जनरल टेंडेंसी, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, डिलीट का बटन है डिलीट कर देंगे। लेकिन उस वक्त डिलीट का ऑप्शन नहीं था, सो बेसिकली वो डिलीट का बटन अगर आज के मॉडर्न कैमरा से भी निकाल दे तो डेफिनेटली और ज्यादा लोगों को जो स्किल्स है वो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे तरीके से टेल देम समझना दैट यू चालू कैन होगा। यूज ओनली वन मेमोरी कार्ड, और इसके एग्जैक्टली। बाद आपको नया मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा. तो इनबिल्ट मेमोरी कार्ड का जो वो भी सिस्टम बहुत है वही डाल सस्ता है देते यार. हैं। नहीं नहीं यार, डिजिटल बहुत सस्ता है, बहुत इजी है. You करेक्ट। can still see the image. That's the biggest thing. So एग्जैक्टली। imagine after clicking something, you're seeing the image after 2 weeks. So you're going through your करेक्ट। notes saying that इसको इतने बजे लिया था, इसका image number 1, f stop ये, एग्जैक्टली। shutter speed ये, time taken this. करेक्ट। राइट। एक वो है. दूसरा चार्ट आपका ये रहता था डेवलपिंग चार्ट, डी अच्छा, वो सेवेंटी टू लिखते थे उस डेवलपिंग. वक्त, मतलब अगर आप गए हो शूट करने लिखना के लिए अभी तो हाँ, लिखते थे लिखना आप पड़ता, पूरा पूरा? क्योंकि राइट। 1-2 हफ्ते के बाद मुझे क्या पता कौन सा शटर्स पे लिया है, कौन सा एसओ पे लिया है, मैंने कुछ लिया नहीं. एग्जैक्टली। मैं बोला सब कुछ लिखना चालू कर दो, बाद में क्या होता है डेटा के साथ बाद में करेक्ट। देखेंगे. एंड एंड उस वक्त सेकेंडली नोट्स देन, भी नहीं थे। राइट। या नोट्स भी नहीं थे हमारे पास, जो नॉर्मली हम लोग मोबाइल फोन में नोट्स बना सकते हैं अभी। एब्सोल्युटली वी used to write in the notebook यार, वो क्लासमेट का नहीं, वो जो भी अंजलि बुक स्टोर से करेक्ट। होता करेक्ट, छोटा सा। था. तो this one part was shooting, the second part was developing.
करेक्ट। डेवलपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी विनय सर, राइट, उस वक्त? Not really. For a lab, it was very good, but और एंड I could कंज्यूमर? if you could develop your own rules. I was developing my own rules, so ओके, understanding developing was a very big thing because how to load up a film. करेक्ट। इट्स अ स्किल बेसिकली टू लोड अप, उसका पूरा जो क्लीनिंग होता है, देन स्कैनिंग, एंड देन प्रिंट में जाएगा। Scanning था नहीं तब, स्कैनिंग नहीं था। तो आप कैसे डेवलप करते थे? थोड़ा क्यूरियस मैं भी हो We रहा used हूँ, to ऑडियंसेस take, भी जानना चाहेंगे। we used to take a roll and then we used to put it in a loader. It used to keep on rotating like this manually. And उसके ओके, अंदर फिल्म आपका स्लाइड होता रहता था, ये पूरा अंधेरे में होता है। And जहाँ there पे was a आपको ball कुछ भी दिखाई bearing. नहीं दे रहा है। अगर मुझे देखा तो मतलब फिल्म ओवर एक्सपोज हो गया ना। करेक्ट, मतलब थोड़ी सी भी लाइट आपके रूम में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डार्क हो। इसके लिए तो मैं डार्क स्पॉट्स ढूंढता था, किधर मैं लोड कर सकता हूँ फिल्म। ब्लैंकेट के नीचे, धोई बंडल के ऊपर, वही बोला था ना स्टार्टिंग में। तो एग्जैक्टली, वैसे लोड करते रहो। और लोडिंग के टाइम करेक्ट, नर्वसनेस इतना होता था, योर हैंड समटाइम्स यूज्ड टू स्वेट, और ये माथे पे स्वेट आ जाना चालू हो जाता था। एग्जैक्टली, राइट। स्वेट आप घबराहट होती है। पे गिरा, हाँ फिल्म पे गिरा मतलब गुड बाय टू योर गया। फिल्म। वो स्पॉट गया तुम्हारा फिल्म पे। ठीक है। एग्जैक्टली, ज्यादा रोटेट करने के टाइम उंगली के ऊपर स्वेट आ गया और स्वेट फिल्म पे टच किया, फिल्म वापस से क्या कुछ लग ना गया। कुछ बदला होता है। हाँ। उसके बाद देयर इज वन स्टूपिड बॉल बेयरिंग ऑफ दैट लोडा, आई स्टिल रिमेंबर। उसके साथ मेरा लव हिट रिलेशनशिप था। जब भी वो स्मूथली चलता था, पूरा फिल्म अंदर आराम से रोटेट होके चले जाता था। जब वो करेक्ट, अटकता था ना, फिर मैं ऐसे बोलता था भाई अभी क्या करूं यार। फिर करेक्ट, पता नहीं, चुपचाप से फिल्म निकालो अंधेरे में, साइड में रखो, फिर बस वो बॉल बेयरिंग को फील करिए, बोला हाँ अभी करेक्ट पोजीशन पे वो बॉल बेयरिंग आया, वापस से रीलोडिंग स्टार्ट करो। और करेक्ट, उसके बाद आपका डेवलपर टैंक में जाता था फिल्म। और डेवलपिंग करेक्ट, टैंक anywhere between 8 to 12 minutes रहता था, depending on करेक्ट, ISO and depending on concentration of your developer. तो फैंटास्टिक। कितने रूल्स मैंने बर्बाद किए भी है। So you must have एग्जैक्टली, got the developing time right, but your ISO would have been wrong. Because मैंने करेक्ट, 100 के लिए कैलकुलेट किया था और ये 400 का था। मैं देख रहा हूँ सब राइट। कुछ ज्यादा ही काला हो गया, बोला शिट। बोला अभी क्या करूँ। बोला ठीक है, ये रोल गया बर्बाद, अभी दूसरा रोल निकालो। एग्जैक्टली, एंड प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त वो टाइम भी चला जाता था, जैसे अगर नेचर Yes. की आप बात कर रहे हैं तो Third वो problem टाइम was दोबारा नहीं आने वाला। part two of the problem. Part three I still haven't come to it. Part three was printing. You had ओके, different grades of paper, grade 1 to grade 5. So ग्रेड कौन वन, से ग्रेड टू, grade of ग्रेड थ्री। paper? Yes, grade 4, grade 5. 5, 1 being the lightest, 5 being the hardest. But then, which paper of grade do you use with which negative, and what is the exposure time you give on the printer head, so you get a correct करेक्ट, exposure on the paper. ओके, But third problem, फैंटास्टिक। okay. Now fourth problem, I'll tell you. Print has to be developed. Concentration of the developer and the hypofixer should be correct. Otherwise, print पूरा blue हो जाता है. Developer में ज्यादा time print को develop करेंगे, करेक्ट, तो पूरा काला हो जाता है। पूरा कला। शायद बहुत कम सारे करोगे तो नए बच्चों ने अच्छा। देखा भी रहेगा, वो फिल्मों में हाँ, दिखाते हैं कि पूरा ट्रे होता है, उसके अंदर केमिकल है, हाँ। वो ऐसा घुमाते हैं। आप उसी दैट्स प्रोसेस व्हाई की ये बात कर ये रहे हो अभी। चार प्रोसेसेस करते करते मेरे को 4 साल लग गए, और तब जाके समझा भाई ऐसे होता है। करेक्ट। सो डेफिनेटली आपकी बेसिकली वो हार्डकोर ट्रेनिंग हुई है, इन शॉर्ट अगर मैं कहने के लिए जाऊँ कि जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, मतलब पॉसिबल नहीं, यस अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। आजकल के देख के मैं इतना रोता हूँ ना। बोला यार तुम लोगों को कितना इजी है, मतलब ऐसा अंदर से रोना आता है। बोला यार मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुम लोग ने तो बस एक बटन दबा के सब आ गया। यार एग्जैक्टली। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सर माफ कीजिए, वही लेकिन बोल मैं के भी आगे। एक्सपेरिमेंट करता हूँ वो। डेफिनेटली मुझे भी बच्चों को जब देखता हूँ तो वही लगता है कि जो हमने सीखा था एंड जो अभी अवेलेबल है इक्विपमेंट्स, जहाँ पर उनको सारी चीजें रेडीमेड अवेलेबल है, बट देन टू वहां पर वो स्किल सेट मिसिंग होता है। बहुत No, ज्यादा that's the स्टूडेंट्स को beauty पता of ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। you don't get this. This is the beauty of technology. This is the beauty of evolution. एग्जैक्टली, What took me 4 years to learn, 20 years or 30 years down the road, I can learn it in 4 months. करेक्ट, I can actually concentrate more on my art. मैंने जो गधा मजदूरी किया है, I feel bad because I had to go through it. But if I was not born in that era, probably I wouldn't have taken up photography. एग्जैक्टली, It was that struggle which made me take photography and make me fall in love with it. So now, if you see that you can master your camera within 6 months करेक्ट, maximum, सब कुछ हो राइट, जाएगा। उसके बाद आपका आर्टिस्ट जगना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड वो होगा तभी जब आप सामने बहुत सारे इमेजेस देखोगे, एनालिसिस करोगे, बाकी के लोगों का काम, खुद का काम, खुद का एक प्रोसेस दोगे, टाइम दोगे खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो धीरे धीरे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप होगा। Always remember they say art is subjective, na? So either एग्जैक्टली, you can compare your images, or
Or don't compare at all. Study it by yourself and say, this is what I like. I Correct. think I took the second part. If you ask me Exactly. who are your masters, who do you follow, I said I don't know anyone. मैं अपना करता रहता हूँ, मैं ही डिसाइड करता हूँ अच्छा नहीं Correct. लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आगे चलता रहता हूँ. Correct. लेकिन आगे But चलता रहता हूँ. that is the वो पार्ट important part, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. right? So यू हैव टू कीप. करेक्ट, आपने जैसे कहा कि कंटिन्यूस काम करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्टार्ट करते हो किसी चीज को, कंसिस्टेंसी देते हो, लेकिन एक टाइम के बाद में जाके वो छोड़ते हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो चलो तोड़ दो। लेकिन वो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे अगर चलते रहे तो। Absolutely, and this is not true in only photography, it's true in any field. एग्जैक्टली सर। Those guys who play sports, they are not playing on theory, they're playing on skill. And that skill is improving all the time because they keep on playing continuously. प्लेइंग, एग्जैक्टली। सो यहाँ तक आपकी जर्नी थी जो आपने चालू किया, जहाँ से आपने धीरे धीरे खुद के अंदर के आर्टिस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की, खुद के स्किल से डेवलप किए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा तकलीफें भी झेली, आपका वो डार्क रूम Correct. वाला जो वो था। अब इसके बाद में जब आपने करियर चालू किया लाइक आर्किटेक्चर फोटोग्राफी का, सो सिर्फ Hmm. फोटोग्राफी में आर्टिस्ट को आर्ट आके मतलब नहीं, उसको बिजनेस सेंस भी होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो Correct. फिर वो आर्ट को बेचेगा कहाँ पर। तो वो जो स्किल Correct. सेट है वो आपने कैसे एक्वायर्ड किया, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? To generate a revenue stream, you have to find out where the money is. ओके, लेकिन बहुत सारे जॉनर्स है ना, जैसे अभी ना लोगों को या जो नए आर्टिस्ट है अभी उनको लगता है मैंने वेडिंग डिसाइड इज कर लिया फाइन। आर्किटेक्चर है. मैंने डिसाइड कर लिया आर्किटेक्चर इज द easiest progression from nature. It still करेक्ट। keeps my history of learning photography intact, all the skill set I've developed while learning photography intact, and I can monetize it. I can make money out of it. So the next thing I found out, यार मेरे को नेचर में ही लगता है आर्किटेक्चर कर सकता हूँ. It's not. It's also not to say that आप आर्किटेक्चर ही करो. आप फैशन में भी हो सकता था मैं. पैशन इज राइट। मतलब होटल में भी घुस अपॉर्चुनिटीज सकता. थे, रास्ते अलग अलग थे, बट आपने चॉइस किया दैट इज एन आर्किटेक्चर, बिकॉज आपकी Yeah. बेसिक माइंडसेट के Now साथ में from there, आपका जो। once you decide, see what happens is once you decide which genre you want to go in, then you have to start thinking like a businessman. करेक्ट। Architecture के लिए it's a very simple logic यार. Who will pay me to shoot buildings? Who will pay me to shoot interiors of a room? घुमा फिरा के दो आंसर आता है. एक आर्किटेक्ट्स रहेंगे, आर्किटेक्ट राइट। दूसरा होटल्स रहेंगे. करेक्ट, आर्किटेक्चर्स एंड बिल्डिंग्स एंड होटल्स, उनका ही बस. बेसिकली वहां पर है। तो इतना मैं समझ गया था बाय 21 दैट बॉस, ये दो पीपल ही मेरे को पे करेंगे अगर मेरे को पैसे निकालना है फोटोग्राफी से. ओके ओके। देन यू जस्ट स्टार्ट टारगेटिंग आर्किटेक्ट्स एंड होटल्स. करेक्ट, फिर आपका जो बिजनेस स्किल से आपने वहाँ पे यूज किया, एंड पहला जो आपको काम मिला था लाइक प्रोफेशनल कमर्शियल असाइनमेंट, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज जब आप पैशन के लिए शूट करते हो, जब आप खुद की इमेजेस से, और हम लोग सोचते हैं कि चलिए ये इमेज मैंने शूट किया है, तब आपका अप्रोच अलग होता है, लेकिन जब आपको कोई पे कर रहा है दैट टाइम, कभी कभी माइंडसेट में ऐसा आता है कि नहीं, हम लोग जो काम रेगुलर भी कर रहे हैं तो बहुत कॉन्शियसली करना चालू कर देते हैं कि नहीं खराब हो गया तो बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है कि समवन इज पेइंग फॉर मी, पेइंग टू मी फॉर दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डर or that fear of rationally saying that you know what, if I mess this assignment up wasn't there यस। for the simple reason I started with film. ओके ओके। तो when I went inside मैं बोला फ्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा. अभी तो करेक्ट। डिजिटल कैमरा मेरे हाथ में है. By the time I was एग्जैक्टली। 2020 when I had a digital camera, so the confidence was at another level, saying that you know what, I can definitely shoot because now I have a digital camera. I don't have to worry if my exposure is right or not. एग्जैक्टली। तो Now I went into the approach saying that is the light right or not? नाउ द बिगेस्ट चैलेंज वाज द लाइट, राइट? Yes. And mastering that or understanding how do you light it up, that was a very big challenge, and that is still evolving. So there have been parts where I say I'll do it in Photoshop. There have been parts where I'll say I'll wait for the actual thing to happen and then push it forward. करेक्ट। And this judgment has come over lots and lots of shooting years. तो सर आपका जो पहला असाइनमेंट था कमर्शियल असाइनमेंट, जहाँ पर बहुत बार ऐसा बैक ऑफ द माइंड होता है कि चलो वो कोई पैसे देने वाला है या कोई किसी को मुझे काम दिखाना है, अप्रूव होगा या नहीं होगा, बैक ऑफ द माइंड थोड़े थॉट्स चलते रहते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था पहले असाइनमेंट का, जब आप एक्चुअल में काम तो आ रहा है, काम मांगा भी है, काम भी मिला हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्टी है? Thankfully, life has been. I would say that first time I got my assignment was while I was interning my guru, the guy I learned architecture photography under. ओके। Rangoon wala.
Now, I worked with Ali for 3 years. So there was a client, Ali's client only, and he said that, I don't have the budget to afford your charges, Ali. Can you recommend some Correct. other guy? He just looked at Correct. me and says, he's your man. So the Correct. client we were on Ali's set only, and he walked up to me. He's like, Vinay, can you shoot something like this? I said, yes, sure, I can. Right. I said, so he said, yes, okay, when you get free, let's discuss this. I said, so I'm free right now till you guys are setting up the shot. If you want to talk about it, I'm more than happy to talk. Correct. So he said, okay, let's just discuss economics or commerce of it. Okay. He explained me the assignment and then he asked me, how much will you charge? Right. God's grace, Ali was around. He just comes and says, he's going to charge you this much. Do you agree? अच्छा, Even उन्होंने I didn't प्राइस know. बता दिया आपका? उन्होंने बोला ये इसका इतना ये प्राइस है. जी. एंड वो कमर्शियल असाइनमेंट वहां पे डन हो गया? मैं कुछ नहीं, आई वाज वेरी स्ट्रेट फेस. मैं हंसा भी नहीं. मैं एकदम स्ट्रेट फेस था. बोला विनय राइट. कुछ डिस्काउंट होगा? बोला सर मैं देन आई सेड सर मैं तो आपको ज्यादा कोट करने वाला था. इनने पहले कम कर आपको दिया. कम कर दिया सर. लेकिन देखिए अगर होता है तो. अच्छा, पहले आपने ऑलरेडी कमर्शियल असाइनमेंट का प्राइस खुद डिस्कस किया नहीं, वो आपको मैंने मिल कुछ चुका डिस्कस है? नहीं. मेरे को पता चला सामने से आया और बोला तुम राइट. करोगे? मैं हाँ बोला और बोला कितना चार्ज करेक्ट. करोगे? मेरे बॉस ने आंसर कर दिया पीछे से. एग्जैक्टली. और बोला बाद ये में इतना आप. चार्ज करें. करेक्ट. आफ्टरवर्ड्स आई थैंक्ड हिम. मैं बोला सर पार्टी दे दूंगा लेकिन सर ज्यादा करेक्ट. बड़ा नहीं क्योंकि वो पूरा निकल जाएगा हाथ से. But एग्जैक्टली. his point was right. Like, no, because you don't know how to bargain, so I just bargained it for you, and now करेक्ट. enjoy it. Now, this is your base rate now. Start from here. सो बेसिकली वही होता है ना सर कि अब कई बार जैसे आप एक आर्टिस्ट हो, आपने आर्ट बना दिया, अब उस आर्ट को क्या प्राइस रखना है, किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आपके इस आर्ट को पहले रखना है, वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता और वहां पर ही Now, इशू आता है. see, there are two ways to go about this problem. One, you have already created an image, then you're putting a price on it. Second, you have to generate the image, ओके. and then you have to charge for it. So, which boat are you in first? You have to decide. Now, first category करेक्ट. generally would be आपने वाइल्ड लाइफ शूट कर लिया, नेचर शूट कर लिया, करेक्ट. या कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी कर लिया, जिधर भी कर लिया. वो आपने शूट कर लिया, प्रोसेस कर लिया, इमेज इज रेडी एंड यू हैव टू सेल इट. नाउ दोस करेक्ट. काइंड ऑफ असाइनमेंट्स आई वोंट बी परव्यू टू, बट आई कैन ऑलवेज से दैट अगर मैं ये location matters. If you go to the other station and try to sell that print, you know what you'll get. If you go करेक्ट. to if you go to Churchgate, you'll get a एग्जैक्टली. different rate. If you go to a art gallery, you'll get a different rate. If you go to a करेक्ट. private collector, you'll get a different rate. एग्जैक्टली. So know what you have generated and know where you can sell it at what price. करेक्ट. एंड द So I सेकंड would वन rather जहां पर suggest, क्रिएट करना है. I would see for the first one, I would rather say just go to the most expensive place and sell it for the cheapest what you can. कुछ तो एग्जैक्टली. पैसे हाथ में आ जाए. बट वो वही एक अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर है, जैसे बेसिक आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको पता ही नहीं होता कि इतने सारे प्लेसेस भी है इस पर्टिकुलर आर्ट को सेल करने के. उनको लगता है कि एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊंगा एंड वहां पर अगर मुझे नहीं मिला देन दे गेट डिमोटिवेटेड. Not really. I mean, you will get demotivated. It's a part and parcel of being an artist. Matlab, my life is not all. I've received 90 no's for every 10 years. So so what do you do about it? I mean, मतलब मेरे को तो ना कितने लोग ने बोला है sorry we can't afford you or we don't like your work. अभी उसके वजह से I'm still not going to change the way I shoot, the way I want to shoot. एग्जैक्टली. जो आपने Because अभी थोड़ी those देर 10 पहले who have बात की. selected, because the 10 who have selected me, they have selected me for the work I've been doing for the rest of my all my life. Not rest, but all Exactly. my life. And from here Correct. where I take different directions, that's a different thing. So ये confidence तुम लोग को जब ही आएगा once you start generating revenue. वो कहावत रहती है, करेक्ट. जब सर पानी के ऊपर रहता है तो तुम देख पाते हो क्या हो रहा है. करेक्ट. जब तक पानी करेक्ट. के नीचे है ना तो डूबे ही रहते हो. तब कुछ भी हाथ एग्जैक्टली. पाव मार के कर लो. So if you're a budding photographer, first of all, if you think about starting professionally, I would first say that secure a constant revenue stream which you can tap into. ओके. So it could be product photography, it could be wedding also. The things you don't like in photography, it could be those. But उधर से पैसे मिल रहे हैं, collect कर लो. That will एग्जैक्टली. give you a launch pad. That will give you a podium to say that okay, पैसे तो आ रहे हैं. अभी let me start navigating towards the area where I want to collect, where I want to be. एग्जैक्टली. करेक्ट. So there is no harm in. I have no harm in telling you anyone saying that if you can't generate revenue, start wedding photography.
easiest photography field to get into. Correct. Literally the easiest photography field to get into. But also make sure that if you're getting into wedding photography, and if that is your end goal, then all in well, all is well. I mean, there's no complaints. Correct. If you But want to become only a also, wedding photographer. yeah, also know when to leave it. Right. That's the Secondly, part. if you feel that you can do wedding photography and fashion photography or product photography together, I'll tell you, over a period of time, weddings will take a toll on you, and you will end up losing interest in photography. At Exactly. least from what I've seen, from what I've experienced personally, you can't survive in weddings for too long because it is very fast paced, I would say. It's Exactly. not monotonous, but it is very fast paced. करेक्ट बहुत ज्यादा जल्द जल्द चेंजेस होते हैं Yeah. वेडिंग फोटोग्राफी So में suppose, let's just say that you want to become a fashion photographer and you don't have money right now, so you get into weddings. So you can keep shooting weddings and you can look out for fashion assignments, but there will be a point of time when you are getting more fashion assignments than wedding, and that's the time you have to drop wedding, and you should be courageous enough to say that, you know what, I'll take a hit in my revenue stream. First, I करेक्ट used to earn 100 rupees. I'm just putting a number. First, I used to earn 100 rupees, wedding and fashion combined. Now I'm only earning 50 rupees with only fashion combined. That means I'm करेक्ट still on the right track. I've taken the hit. एक्जैक्टली वो But डिसीजन at ज्यादातर least लोग from नहीं ले पाते being a wedding photographer, I've transformed myself into becoming a bigger fashion photographer. यस इन That शॉर्ट jump, how do you jump within photography, is very important, because if you ask any corporate guy, also, I mean, corporate in the sense who works in a company, he राइट will also keep jumping from one company to another company in search of a bigger paycheck. Sometimes he might get a good role, but pay will be less, but he'll say, you know what, I want this role because later on it can launch me in the future in some direction which he chooses. So एग्जैक्टली even in your career, there must be times when you must be taking a decision where your revenue stream drops, but you're happy with the kind of work you're doing. So in photography, you have to search for that. So top of my head, I can think wedding is probably the easiest market to get into. एग्जैक्टली सर एंड अभी जैसे आपने बताया कि आपकी स्टोरी आपने बताई वहां पर आपने बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी फेस किए थे लेकिन आपके थ्रू आउट एंटायर जो आपका करियर है जहां से आपने फर्स्ट डे ये सोचा कि मुझे नेचर को शूट करना है वहां से लेकर टुडे आज के दिन तक कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंसिडेंस होगा जिसको हम लोग लोएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं बिकॉज एक आर्टिस्ट के लाइफ में बहुत सारे लोएस्ट पॉइंट आते ही रहते हैं आपके मेरे लेकिन कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट होता है जहां पर फील होता है कि नो नाउ इनफ अब इसको बंद कर देना है या जो भी कई बार हम लोग अलग अलग स्ट्रीम्स भी सोचना चालू कर देते हैं कि चलो छोड़ के There इसको are जॉब चालू कर multiple. देते हैं Okay, let me tell you one thing. There will not be one lowest points. There will be multiple lowest points. मल्टीपल एग्जैक्टली And yeah, there'll be times. Every time you'll say, इससे और बुरा क्या हो सकता है? And they'll 2-3 साल में इससे भी बुरा हो भी जाएगा. And you'll हो be like, जाता okay, है हो भी गया. तो करेक्ट अभी एटलीस्ट स्टार्टिंग में मैं सोचता था इससे बुरा और क्या हो सकता है. अगेन यू शुड स्टार्ट क्लाइंबिंग अप. करेक्ट करेक्ट अब ये गिरने की आदत पड़ गई है. अभी डर नहीं तो लगता है. बोला तो ठीक वही है, एक आपका नहीं हुआ. मोटिवेशन है राइट Okay, there is. I'll tell you honestly, there is no motivation for me. The thing is, the starting of the interview, I'd said either it's dedication or you call it madness. मैडनेस I राइट think this was sometimes it's madness. Sometimes what happens is because I have not studied anything beyond photography. I stopped करेक्ट studying after 12th standard. राइट ओके So I don't know anything else. और कुछ मालूम ही नहीं है करने के लिए. करेक्ट आप तो मुझे बोलो कि फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट एक्सेल शीट खोल के बोलो कुछ बनाओ, बोलो मेरे को समझ में नहीं आता है. मतलब राइट मैं बिल पे भी एक्सेल शीट पे बनाता हूँ और 12.09 कुछ ऐसे लिखता हूँ, सडनली और कुछ अमाउंट साइड में दिखता है. बोला ये क्या हो गया भाई, डेट डाल रहा हूँ इधर मैं. और लेकिन एग्जैक्टली ये डेट मेरा नहीं है. मतलब वो कुछ एक्सेल का फॉर्मूला किधर तो लगा है ताकि मैं हैव टू कॉल माय वाइफ एंड से लिसन यार, ये एक्सेल में कुछ हो गया है देखना, मेरे को इधर डेट डालना है. मैंने लगा करेक्ट तेरा ये फॉर्मूला एक्टिवेटेड है. बोला मुझे मालूम नहीं है, मेरे को खाली उधर नंबर चाहिए, वो डाल दो. सो यू नो, राइट so there was, so call it motivation, call it madness, call it your own energy. I had no other choice but to move forward, because at the age of 16 I said मेरे को photographer बनना है. Now I'm double that age, more than double that age. I'm still looking at saying भाई अभी भी मेरे को और आगे बढ़ना है. So what happens over a period of time that your lows, what you feel in life, are suddenly not that low as you felt when you're in your 18s or your 20s.
Initially, first you will be like, I have no money, I have no camera, I have nothing on me, and then I have, what can I do? Slowly, slowly, you start building it up, and it's not a process where you'll feel that you look back and you say, "Arey, next day I'm the biggest photographer in India." करेक्ट, It will be a slowly, slowly, step by step. I mean, when I started my website in 2016, I used to look at it and saying that, yeah, ठीक है, it's nothing that great. And now it's been 2023, it's over to 8 years. I still look at my website and say it's getting there, but it's still not there. I still don't say that wow, this is my website, this is how my website should be. I said nahi yaar, इसमें ये और चाहिए वो और चाहिए. I still nitpick, I still करेक्ट, find loopholes or draw holes in the paper and say ये ठीक नहीं चलेगा, इसको ऐसा और करते हैं. But एग्जैक्टली, for someone who has not seen my work over the period of years, thank you so much. For someone who has not seen my work for a period of long years, or first seeing it for the first time, they might like it and say, "Wow, this is a good photographer." करेक्ट, So I know my flaws, and I'm still working on it. And there is no, if you tell me what was your lowest point of life, I'll come back to the same thing, saying that there has been no low points in my life. There have been multiple low points in my life. Not no, not one single, but multiple low points एग्जैक्टली, in my life. And it's your mental ability to come out of it. करेक्ट, You okay? Think about it. If you're playing a sport and you want to represent your country at a national level, you will have bad days. But do you give up because of those bad days? नहीं देंगे, गिव अप तो नहीं करेंगे. You won't give it up. Why? Because there is an insight which you tells you that what, I have the energy to pull it off and I can do better. यस, So the करेक्ट, same level of dedication you require out here. एग्जैक्टली, क्योंकि वही एक पर्टिकुलर चीज है जो सिर्फ चलते चलना है, And छोड़ना yeah, नहीं. and unfortunately, our field is very lonely. यस सर, What you are एब्सोल्युटली, going through, I cannot experience it, or what I've gone करेक्ट, through, you cannot experience it. We can share experiences, we can give करेक्ट, suggestions. And problem is, एग्जैक्टली I सर, can only take suggestions from photographers. I can't take suggestions from my parents, which kind of hurts me. Also, saying that your close, especially your close ones, will tell you, "Why don't you try it this way?" And you'll say, "Boss, it doesn't work this way." And it's very difficult to explain why it won't work this way. एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे आई थिंक हमारी भी पहले बात हुई थी, एंड मैंने आपको बताया कि एक फोटोग्राफर के प्रॉब्लम्स क्या है दूसरा फोटोग्राफर ही समझ सकता है, आप किसी के साथ में शेयर Absolutely, नहीं कर सकते, वो एक इशू होता है. you can share it, but I just feel that my non-photography friends will not understand this. Very few of my friends who have seen my journey from very young age, they understand this. Well, okay, it makes sense what you're doing. Continue on it. But I don't get the kind of inputs what I want from a professional standpoint of view unless I talk to another photographer. करेक्ट, एंड वहां पर भी जब डिस्कशन होता है तो बहुत सारी नई नई चीजें निकल कर आती है See, कई बार. I'll tell you, thing, we photographers are very insecure breed because हम लोग को मुश्किल से क्लाइंट मिलता है और हमारा क्लाइंट इज वेरी फ्रिकल माइंडेड. क्या उसको उसके बाद अच्छा काम मिला तो वो उधर भाग जाएगा. करेक्ट, There is nothing you can do about it. You think about it that you have to play 200 matches to qualify for India. You have to do 200 करेक्ट, shoots to qualify in the big leagues. ऐसे सोच के चलो. एग्जैक्टली, एंड जिस दिन So शूट you है will वो भी एक अलग ही अपना चैलेंज है. absolutely, and you will have those days where you'll say, यार अभी ये लो पॉइंट है मेरा लाइफ का, अभी क्या करूं? बोला ठीक है और काम करूं. सो अभी And all those guys who have made it on top, they have gone through this entire process, and this is how they have done it. There is no getting away from it. तो एक बात अगर मैं सिंपल इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, क्योंकि तो शायद मैं कह रहा हूँ लेकिन आप बताइए कि वो करेक्ट है क्या नहीं है. जैसे आपने भी वो लाइन देखी है, आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक अभी तक आप जर्नी कर रहे हो, हमने भी वैसे ही जर्नी स्टार्ट की थी. तो बेसिकली अभी जो बच्चे हैं या जो ऐसे लोग फोटोग्राफी के करियर में आना चाहते हैं एंड दे वांट कि चलो फोटोग्राफी दिखने के तो बहुत अच्छा लगता है, बेसिकली जॉनर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि कैमरा लेकर फोटोज क्लिक करते रहूंगा. बट मिथ भी कई बार ऐसे लोगों के पास में है कि मैं स्टार्ट कर दूंगा, एक दो महीने में मेरा जो पूरा का पूरा लर्निंग है वो हो जाएगा, आई विल बिकम अ प्रो फोटोग्राफर, और उसके बाद में मुझे क्लाइंट्स फटाफट मिलना चालू हो जाएंगे एंड देन आई विल बिकम अ वेरी रिचेस्ट फाइनेंशियल लेवल पर. तो ये बहुत सारी गलत माइंडसेट के साथ में जो स्टूडेंट्स से मैं ज़्यादातर लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो ये मुझे पता चलता है. आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, Okay. एक्चुअल में वैसा है या नहीं है? Okay, now think about it. Someone who is an engineer who's starting his career. करेक्ट, You must be having friends who must have gone through यस, engineering. Must have. राइट, What was their starting salary? They must have paid अराउंड lakhs to get into 18, college, and they must have come out with some करेक्ट, 15 25 के बीच में कुछ 15 to ब्रैकेट में रहते हैं. एग्जैक्टली, ठीक है. करेक्ट, फिर वो ब्रैकेट उन लोगों का बढ़ते गया. करेक्ट,
then maybe in their 40s, maybe in their 50s, you can say इन लोगों का लाखों का पैकेज रहेगा. Correct, correct. But instantly in any field from joining, I'm talking normal regular life. Don't compare the IITs. Okay, I'm talking normal regular life. Even IITs में अगर 15-20 नहीं लाख लाख में मिलता होगा मुश्किल से. Correct, ठीक है. Now it took them time for them for their salary to increase, right, and salary increased based on the experience. Similarly, correct, even for us, our salary or our revenue, what you can generate from a freelance assignment, from a gig, will only increase after certain level of portfolio you have. So it's not going to be one hit correct, wonder. The fact is, if you can replicate the same assignment all over again, day in and day out, then you can increase your charges. correct. Market is a very great level. If your work is good, you will be picked up. Exactly. If your work is not good, then you know that you आप will भीड़ have to में keep भाग रहे struggling. हो. You improve your work. Yes, This is considering other factors involved, like what is your networking, how do you network. Now suppose if I happen to be film stars with some one of the new star kids, I'll get correct, assignments like this. I will exactly, get assignments like this, but the problem is, can I keep that consistency up? If my consistency goes down, or if my first assignment itself is so bad, I may not get a second chance, or correct, by the time I get a second chance, it will take a little long. exactly. तो basically it's a actual truth जो reality है जो हमको accept करना जरूरी है, and we The have to reality understand. is what is your skill set and how your images are coming out. If you think you have mastered photography, going through a course, then go to any of your professional courses. They would have mastered the camera aspect of it. They would have never mastered the skill aspect of it. Now skill, I'm talking very generically, considering composition, color, lighting, content. How do you derive all those things in one single frame? That Yes, skill set will take you a long time. That skill set will take you a lot of time in the field to understand. correct, Secondly, what sells a photograph is that I may not have to like my own photograph, but my clients have to love that photograph. Then only he will come back for the second frame. yes, correct. Take an example. I have shot for some hotels. एक hotel का मैंने exterior लिया. Yes, I know it for a fact that a lot of other hotels, same hotel, I have taken a better angle. I can generate a better angle, but they will not like it because उसमें उन लोगों का pool नहीं दिखेगा. उसमें उन लोगों का एक दो correct, चीजें जो important है उन लोगों का नहीं दिखेगा. So you have to correct, understand the reason why the client is commissioning you for the photograph, because through that photograph he wants to sell certain things. If he is not able to sell, he's not going to come back to you again saying that. correct. ये And मेरा you may not pizza like समझ. that frame. You may not like that frame. There are some of the room shots which I do, which I say, "Yeah, I will never shoot a room like this. I don't want to shoot a room like this. I'm not very happy shooting a room like this. Correct, correct. But I have to sell it because the hotel manager Client will की come and tell requirement ही me, वही है in short. वो बोलेगा मेरा ये रूम का हाईलाइट ये है, जब गेस्ट आता है तो उसको बड़ा बेड दिखना चाहिए, उसको बाहर का व्यू दिखना चाहिए. अगर तू मेरे को खाली आधा बेड और पूरा व्यू दिखा रहा है तो इट विल नॉट वर्क. तू पूरा बेड दिखा रहा है, Correct, आधा व्यू दिखा रहा है, दैट विल नॉट वर्क. So he has an correct, idea in the mind. He has an image in his mind. I have to replicate that image. Now that doesn't necessarily mean it's the best what I can create, but it's the correct. best for him what I can create, because of which he can generate a revenue, Revenue. because of which he'll call me again. Correct. Without taking names, I'll give you an example. One of the hotels recently, I think this happened all. See, you have to understand in architecture, timelines are not extremely short. They happen over a long time. Correct. So 2020 August sometime, I got a chance to shoot some of the newly renovated rooms of one hotel. Okay. So imagine 5 categories of rooms you have: base, second, third, fourth, fifth. Okay. Correct. So I shot fifth and fourth and the first. Okay. So fifth and fourth, the most expensive, and the first, the least expensive room. Correct. Okay. 2 and 3 were old. Okay. Old shots. Mhm. I shot them. This year, February, he calls me and says, Vinay, I have a problem. I said, what happened, sir? Well, one is selling really well. 4 and 5 are selling really well. Initially, before your photography, 2 and 3 were also selling well, but now the revenue stream from 2 and 3 have dropped. I Okay. said, sir, I'm not understanding what you're saying. मतलब ये तो Correct. मैं आपके business में कैसे involve हो सकता हूँ? बोला, no, Exactly. Vinay, the fact that you have taken 1, 4, and 5, they're selling better than 2 and 3, which you have not taken.
So I want you to come back ओके, and shoot 2 and 3 again. So मेरे करेक्ट, लिए फर्स्ट करेक्ट, टाइम, बट लेकिन उन लोगों के पास 2 and 3 के इमेजेस थे, लेकिन बोला नहीं तू आके शूट कर, करेक्ट। बस इट शोज दैट वन इज आउटसेलिंग 2 and 3, which is one is more cheaper than this, but 2 and 3 इन लोग बेच नहीं पा रहे, बिकॉज़ वो बोल उनके रहे लिए हैं वो ये वन प्रोडक्ट भी है। अच्छा दिख रहा है. करेक्ट, So you have to understand that market itself will tell you. एग्ज़ैक्टली एंड So उसकी there, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, इनसाइट्स मिल रहे हैं, सामने से सिग्नल्स भी आ रहे हैं, बट हमको नहीं समझ में आता कि yeah, एग्ज़ैक्टली coming क्या back to चल the रहा है। point, coming back to the point, I have to shoot what the client wants. यस, So everywhere you have to understand what the client wants. If I can deliver what the client wants, that means next shoot के लिए भी मेरे पास आएगा वो. एग्ज़ैक्टली, And trust me, I didn't like the image for one. ओके, आपने 4 शूट and किए थे 5 I love. वही? हाँ, वन का जो करेक्ट, कैटेगरी का रूम शूट किया था मुझे अच्छा लगा नहीं था. मैं बोला यार क्या कर रहा हूँ यार. बोला सर ऐसे क्यों ले रहे हैं. बोला नहीं मैंने, करेक्ट, मेरे को ये सब दिखता है और इसको ब्यूटीफाई कर, मेरे को यही फ्रेम चाहिए. मैं बोला ओके. करेक्ट, करेक्ट, So somewhere down the line, and because I shot that one, I've got the next shoot because of that. And it wasn't because I got 4 and 5. एग्ज़ैक्टली, 4 and 5 I liked. One I didn't like. But I got the next shoot 2and 3 because of one. Because फ़ोन की client वजह को ये से। पैसा बना दिया तो बोला ये भी बना देगा इस पे. सो बेसिकली वही So होता है ना कि जब understand. आप जो क्रिएट करते हो इमेजेस, आई थिंक जो नए फोटोग्राफर्स है, नए स्टूडेंट्स है, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअल में हमको ये सोचना है कि अगर मैं कोई कमर्शियल शूट कर रहा हूँ, सामने वाले के लिए वो प्रोडक्ट है बेसिकली, सो कौन सा मैं काम करके दूँ जिसकी उसका प्रोडक्ट का सेल ज्यादा जनरेट हो सके, तो डेफिनेटली अगर सामने You वाले have को बेनिफिट हो रहा है तो आपको भी होगा, राइट? absolutely, you cannot know your business better than your client. Client करेक्ट, knows his business and he knows it way better than you because उसका ही business एग्जैक्टली, है. So you एग्जैक्टली, have to help him. Not to tell him that I can shoot better. I said नहीं सर, आपका प्रोडक्ट कैसे बेटर दिखेगा और आप कैसे बेच पाओगे. So first question is where are you going to use this images and how are you going to use this images. करेक्ट, So वो बता करेक्ट, देता देख भाई मेरे को वेबसाइट पे चाहिए या मेरे को होर्डिंग पे लगाना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे चाहिए या मेरे को whatever avenue he chooses. करेक्ट, So idea मेरे को already आता है that okay he wants to publicize it like this. That means करेक्ट, करेक्ट, अच्छा. So what is the highlight? Then the second question definitely comes like what do you think the highlight of the room is? बोलेगा सर्विस. ठीक है तो सर्विस बोलेंगे तो आई एम टॉकिंग अगेन आर्किटेक्चर वाइज. सर्विस में मैं करेक्ट, क्या दिखा सकता हूँ आर्किटेक्चर में. कुछ नहीं. एग्जैक्टली, Not much. I mean service shots with humans. But then if I'm showing a room, I can't show service per se. So they will say that okay, एक तो service हम लोग की अच्छा है बोलो okay. Secondly, decor of the room बोलो okay. I understood what content he's looking at. Third is you have to show the space. So that means I know I have to go really wide. एग्जैक्टली, If the client comes and he loves the view of it, मतलब मेरे को बाहर का व्यू भी देखना अच्छी तरह से. करेक्ट, So now coming back to my original love of nature, बाहर का व्यू, architecture, correct lighting. एग्जैक्टली, तीनों चीजें एक ये साथ आ तीनों गई। चीजें इधर आर्किटेक्चर में मिल रही है मेरे को. करेक्ट, इसके लिए आर्किटेक्चर. करेक्ट। सो एक काम करते हैं, आपकी वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। आई वुड लव टू सी सम ऑफ योर इमेजेस। श्योर, कर सकते हैं Sure, सर, sure. पॉसिबल है? Absolutely. श्योर, It's a website. Anyone can view it. डेफिनेटली सर। सो 2 मिनट दीजिएगा, मैं सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर के इमेजेस अभी देखने वाले हैं। फ्रैक्टल हाँ. इमेजेस बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आया विनय जी? जो इनिशियल आपने वही लिखा है, इसके लिए मैं पूछना चाहूंगा। Uh, Fractal is होता a क्या है मतलब geometrical उसका? design. Any geometrical design which starts off as a small design and you start to expand it in a करेक्ट, proportion of the golden ratio. It creates very interesting patterns. ओके, ओके। You go on about us, definition of a fractal is there. But have you seen kaleidoscope? क्लाइडोस्कोप? नहीं, माफ कीजिए, मैं Uh, अनजान हूँ, नहीं मैंने सुना तो। okay. Basically, a kaleidoscope is like a circular round tube which has got mirrors on the end, and it's got ओके, small, and they put small weird patterns in it, and you rotate it, and it create patterns in your eyes. You put it on your eye, ओके, and you keep rotating it, and you'll see different kinds of patterns being created. ओके। तो Okay, कैन just वी कैन वी गूगल इट? इज इट पॉसिबल? आपकी yeah, परमिशन हो sure, तो? sure, sure, डेफिनेटली sure, sure. इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ना नई चीज समझ में आएगी। तो Kaleido. ये बेसिकली ऐसा कुछ? The second one, third one, fourth one. Yeah. Can you ओके, fourth one? Do you see that? That's a fractal. दिस वन, ओके। तो इसको आप रोटेट करते जाओगे तो? Maybe you'll see different colors and patterns happening. Na? So the fourth करेक्ट, image on top, that's a that अच्छा, that pattern is called a fractal. ओके, ओके। रिपीटेशंस बहुत सारे अलग अलग एंड आप बहुत सारे पैटर्न्स Yeah. आइडेंटिफाई कर पाते हो।
So it's a geometrical pattern when it's expanding. So that's a fractal. ओके, फैंटास्टिक। सो फ्रैक्टल इमेजेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, होटल्स एंड Architecture बाकी क्या बोले? geometry, architecture geometry, small से big fractal. इंटीरियर That's the से thought process आर्किटेक्चर। behind it. That's the thought process behind it. I think someone will get it, someone will not get it. करेक्ट। सो आपने वर्क किया है ताज के लिए, विमानता जो है वडोदरा का, देन रिजॉर्ट, राजवंत पैलेस एंड ऑल। तो बहुत सारे जो एकदम टॉप लेवल के क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके क्लाइंटल लिस्ट में है। एंड जब आप कनेक्ट करते हो इन क्लाइंटल्स के साथ में तो बहुत ज़्यादा उनकी गाइडलाइंस होती है, क्योंकि मैंने भी कुछ कमर्शियल काम किए थे ना कुछ होटल्स के लिए। तो उनके पूरी की पूरी हम्म, गाइडलाइन आती है, वहाँ पर ये इमेज इसी पर्टिकुलर पैरामीटर में होना चाहिए, लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, उन इमेजेस के थ्रू उनको क्या yes. कहना है वो बताया जाता है। शायद आपने भी वो They बहुत have ज़्यादा the फेस किया guidelines. हुआ है। No, no. They have their guidelines in terms of how a bed should be made, what should be kept next करेक्ट, to a bed. एग्जैक्टली। सो कितना So चैलेंजिंग होता है विनय सर कि जब आपको पहले ही गाइडलाइन दे दी गई, आपको सांचा दे दिया गया है, इसी सांचे के अंदर आपको जो इमेज है वो क्रिएट करनी है, जो ऑलरेडी उनके बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, और उसमें कई बार ऐसे होता है कि कलर तो नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त आपको कितना डिफिकल्ट बनता है, क्योंकि अगर मान के चले एक not आर्टिस्ट है। difficult if you understand lighting. डिफिकल्ट नहीं है, राइट? It's not very difficult if you understand lighting. Now pick up anything and if you, करेक्ट, I can show you in my portfolio what's a morning shot, what's an evening shot, what's an afternoon image. फैंटास्टिक। सो आई थिंक ये हॉस्पिटैलिटी वाला एक सेक्शन ओपन कर दे, इज इट फाइन? Yeah. बिकॉज यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज दिखाई दे रहा है मुझे। ये वाइड एंगल में आपने क्लिक किया था, तो यहाँ Hmm. पर बहुत ज़्यादा जो आउटडोर है वगैरह, तो आप एडिटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना इनके ऊपर आफ्टर द शॉट इज टेकन? I edit everything. ओके, They are सो all edited images and heavily edited images because you can open Blue Diamond if you like. If you click on it, ओके, you'll land up on another page. You'll have all the images for that same hotel. करेक्ट। सो यहाँ पर Now, बेसिकली आप जब शूट करते हो तो ऑलरेडी लाइटिंग आप कैसे अरेंज करोगे? जैसे अगर मैं इस शॉट की बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा वाइड एंगल शॉट है, टॉप लाइट्स okay. अवेलेबल है, एंड अगर आप ना देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर बड़े लाइट्स लगा नहीं सकते सब बॉक्सेस वाले, बिकॉज पूरे के पूरे फ्रेम में आएंगे। तो चैलेंजेस क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर इमेज को तो अगर मैं देखता हूँ तो? ये इनका नेचुरल लाइट में शूट किया नेचुरल लाइट में आपने शूट किया है, एंड है। Yes. उसके बाद एडिटिंग वगैरह उसके ऊपर होने के बाद ब्यूटीफाई हुआ है, right? A lot of editing and a lot of beautification has gone into the picture, but we also have to understand that a lot of my images where I find it very tricky, I shoot on a panoramic head. Okay, So this पैनोरामा। image, what that दिस वन। lobby, yeah, this lobby is shot on a pano head. That means it's not one single frame; it's a combination of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 into 5, 35 frames. तो 35 फ्रेम्स को शूट करने के बाद आपने ये एक फ्रेम को बनाया है। One final image consists of 35 smaller frames within it. एंड बेसिकली और भी कुछ वाइड एंगल के शॉट्स जो मुझे मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले आपकी वेबसाइट, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं जब आप बहुत ज्यादा वाइड एंगल शॉट्स लेते हैं। जैसे आई थिंक ये एक शॉट है, इसके अलावा भी एक शॉट था जहां पर पूरा का पूरा लॉन था वो बड़ा, तो वहां पर भी आप अलग अलग टेक्निक्स यूज करते होंगे, राइट, शूट करते वक्त? See, a lot of techniques are based on pano head. The simple ओके, reason for using a pano head is that imagine एक फ्रेम में आप कितना डिटेल्स निकाल सकते हैं. Basically, what is a photograph for you now in terms of digital? Now we डिजिटल all में shooting. बेसिकली इट्स अ डेटा, जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हो It's डिजिटल data. फॉर्मेट में जो आता है। करेक्ट। Perfect. So if you have data which is of 45 megapixel, ओके, you have a lot of data to play with. Correct? यस Compared यस, to a 23 megapixel wala. Okay? करेक्ट Now you'll करेक्ट have more data to play with if I have a 60 megapixel wala camera, right? करेक्ट। ठीक है. Now what the data contains? It माफ contains कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया। पहले सेंटेंस आपने बताया 45 मेगापिक्सल, सेकंड एक तो वाला जो 23 था? मेगापिक्सल है, एक करेक्ट, 23 मेगापिक्सल है, एक 45 है और एक 60 है. ओके, 60 तीनों का मेगापिक्सल, फ्रेम राइट। सेम है. तीनों का फ्रेम सेम रहेगा. लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा 20, 45, 60 से? 60 में डेटा बहुत ज्यादा मिलेगा 60 मेगापिक्सल्स में, लेकिन में अगेन डेटा वहाँ ज्यादा पर रहेगा कंपेयर टू करेक्ट 45 कंपेयर टू 20. ठीक है. 23। नाउ इंक्रीज इन डेटा मींस व्हाट फॉर मी? इंक्रीजिंग डेटा मीन्स? इंक्रीज समझा हुआ नहीं। है डेटा का तो मतलब हम्म, फायदा क्या हुआ था? पिक्चर तो तो जब वही हम है.
तो जब हम लोग उसको पोस्ट प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप उसको इनलार्ज भी उतना बड़ा कर सकते हो साइमल्टेनियसली, ओके, जो तो सब बाकी लोग के को यही ऑप्शन थे। लगता है कि अगर मेरा ज्यादा करके व्हाट हैपेंस इज पीपल थिंक दैट हायर द मेगापिक्सल आई कैन हम्म, enlarge my print more. But there's जी। also second thing is I have more data. Now data in terms of what? My image data. इमेज में क्या रहता है? ब्राइटनेस लेवल्स, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स, कलर कॉन्ट्रास्ट लेवल्स। लेवल्स। जी। ठीक है। अभी कलर जो मेरे सामने स्क्रीन में पड़ा है सबका सेम ही है। कलर चेंज नहीं होने वाला है ना कैमरा टू कैमरा, व्हाइट बैलेंस को छोड़ करेक्ट। के वो सब। ठीक है। एग्जैक्टली। The same frame captured in a 60 megapixel camera will have more color data. यस। That means I ओके। can extract it better. तो वो हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ सेइंग 60 मेगापिक्सल, by the time I've reached megapixel value of 60, you must be saying ये तो बहुत some people will be saying that's a lot of megapixel. 60 is a lot of firepower. Now imagine 45 into 35. 45 मेगापिक्सल एंड 35 मेगापिक्सल, राइट? नहीं, 45 मेगापिक्सल्स उसका 35 फ्रेम्स बना के एक फ्रेम बना है, कितना मेगापिक्सल हो जाता है? ओके। राइट। आई हैव टू कैलकुलेट, मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब है। Don't लेकिन need to, I'll अगर मैं tell you. देखूँ तो 200 या It 250 will के be ऊपर ही 1 point, होगा वो। it will be close to 800 to 1.2 billion pixels. इतने पिक्सेल्स? एंड हाँ। देन डेफिनेटली वो और डेटा from आपको मिला there है। I downsize it to about 150 to 200 megapixels, and then I start extracting the data. बेसिकली इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस जहाँ पर बहुत ही ज्यादा आप Yes, काम करते हो एंड देन heavy बैकएंड file. में उसका काम किया जाता है। It's a lot of heavy file. There's a lot of heavy processing which is going on because simply if you take the lobby, I've divided into multiple areas of 35 frames. So that means I have more data to extract from that frame. That way some areas I don't have to light up. I एग्जैक्टली। can lightly. So that means खाली मेरे को ग्लासेस का डिटेलिंग चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है 23 मेगापिक्सल पे जूम करने के बाद ग्लास पे डिटेल रहता नहीं है। एग्जैक्टली। करेक्ट। बट इन माय फाइल इफ आई स्टार्ट जूमिंग इन मेरे को ग्लास पे भी डिटेल मिलेगा बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट 200 मेगापिक्सल फाइल साइज। एग्जैक्टली। एंड उसके लिए आप मशीन्स दैट्स कौन से यूज करते हो इतने हेवी फाइल्स को यूज करने के लिए? बिकॉज उसके लिए हेवी ड्यूटी मशीन्स भी लगते होंगे ना, जो प्रोसेसिंग नॉट यूनिट है रियली। आपका। आई वाज टिल 2 months ago I was on a 2016 MacBook Pro. ओके। ओके। टाइम तो लेता है। मैकबुक। एग्जैक्टली, टाइम टाइम बहुत ज्यादा लेता लेता है। टाइम लेता है बट इट्स ओके यार। मैं लाइफ में फोटोग्राफी करता हूँ ना, और कुछ करने का नहीं है मुझे। मेरे को करेक्ट। वेब स्ट्रीमिंग देखना नहीं है जब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। कंप्यूटर को एसी में रख दो और चालू कर दो, 5 मिनट एग्जैक्टली सर। काम कर देगा। अभी नाउ these now I have all that M1 M2 M1 Max. I don't even know. I just went give me the fastest Mac possible. I just picked it up. Now this does करेक्ट। it. वो 10 मिनट में करता था वो बेचारा, लेकिन अभी भी चल रहा है। और this does it in करेक्ट। less than 1 minute. एग्जैक्टली, बिकॉज अभी भी हमने भी नए सिस्टम्स यूज किए हैं, नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए हमारे सेटअप में। हेवी फाइल्स ये और चल बाकी के लिए काम के लिए होता रहता है। These are just tools यार, ये चलता रहेगा। I don't want to करेक्ट। sound like I don't know my machine, but I know it for a fact it's fast enough for me to get my job because I want to know my image better. करेक्ट। करेक्ट। सो यहाँ पर जैसे So हम लोग बहुत सारे इमेजेस देख पा रहे हैं, आपने बताया था ये लाइटिंग्स आप यूज करते हो, और उसके बाद में ये बेसिकली पर्सपेक्टिव करेक्टेड इमेजेस है, राइट? एम आई करेक्ट सर? yes. फैंटास्टिक। एंड अब जब ये इमेजेस आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, अब आपने उस लेवल तक पहुंच चुके हो आप, अब इनमें जो एआई के रिलेटेड नए अभी जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो ये कहते हैं कि एआई आ चुका है, अब फोटोग्राफर्स का जॉब खत्म हो जाने वाला है, या फिर आर्ट का वैल्यू नहीं है क्योंकि जो एआई है वो खुद कंटेंट जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली Hmm. आपका जो टेक है वो आपका टेक क्या है? Okay, I'll start with the basics of हम्म, how it revolves. First, to ओके। understand whether you want AI, what is AI? So everybody must be knowing that you can generate images using AI. Type some commands or type some prompts into a system, and then it will give you a visual result. राइट। Okay. करेक्ट। Now you have to start thinking, where do you think AI will come into picture? The biggest deciding factor for AI would be, now. Okay, I'm talking this through my own field in terms of architecture. Now I shoot a lot of architecture. I shoot for hotels. So how I use AI will be in my contents. Results can vary. So understand this. Now, even before I get into AI, now if you go to book a hotel room, what will you do first? बेसिकली ऑनलाइन चेक करेंगे, अलग अलग जो वेबसाइट से एरिया चेक ठीक है। करेंगे, एंड देन ठीक है।
वहाँ पे रिव्यूज देखेंगे, उनके प्राइस चेक So करेंगे। you have zoomed into an area saying that ये एरिया में रहना है, ये प्राइस में करेक्ट, रहना है और ये प्राइस में आपके पास 3 होटल्स आ रहे हैं. So क्या एग्जैक्टली। करोगे? yesterday only I did that। मैं कल होटल में ही रहा, हाँ, तो बेसिकली मैंने इमेजेस देखे, मैंने एरिया चूज किया जो स्टेशन के पास में है। देन ठीक आई है. चेक द प्राइसिंग, अलग अलग ना वेबसाइट्स पे गया, वहां पर चेक किया, कूपन कोड्स देखे, वहाँ के हाँ, होटल्स की कैटेगरीज देखी कि मुझे डीलक्स रूम चाहिए, मुझे डबल बेड चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, वैसे हिसाब से। और उसमें एक होटल मिला मुझे, आई नॉट टेक द नेम, बट एक होटल मिला जिसमें 25-30 इमेजेस थे उस एक पर्टिकुलर नेम की। मैंने वो चेक की एंड उसके बाद मैं डिसाइड किया कि ठीक है, ये 2-3 ऑप्शंस में से ये एक अच्छा लग रहा है, तो इसको पहले डन करते हैं। फिर प्राइसिंग चेक किया तो उसका प्राइसिंग भी अफोर्डेबल मेरे रेंज में था। देन आई बुक दैट। perfect. So what made you pull the trigger saying that this is the hotel is because you saw the images, I करेक्ट। would presume, on their website, on the hotel website? यस, आई वाज ऑन होटल वेबसाइट एंड साइमल्टेनियसली मैंने Yeah. अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है Simultaneously, you वहां पर must भी have देखे। other things, but most of the major decider would be once you go to the hotel website, right? करेक्ट, करेक्ट, पर होटल का वेबसाइट पे देख लिया, हाँ ठीक लग रहा है, उसके बाद यू राइट। माइट चेक इट ऑन गूगल, यू माइट चेक इट ऑन अदर यस। प्लेटफॉर्म्स, अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू फाइंड दिस थिंग, बट जनरली यू वांट टू सी दैट एक बार होटल के वेबसाइट पे आपने चेक कर लिया, इमेज अच्छा लग रहा है, करेक्ट, सबकॉन्शियसली यू चेकिंग, नॉट सेइंग इमेज अच्छा है एग्जैक्ट, तो ही मैं करूंगा, करेक्ट, बट करेक्ट। दैट काइंड ऑफ मेक्स इट डिसाइडर सेइंग दैट हाँ रूम ठीक ठाक लग रहा है, प्राइस ठीक ठाक लग रहा है, होटल एग्जैक्टली। ठीक, आई एम गोइंग फॉरवर्ड टू इट. नाउ टेल मी समथिंग, व्हेन यू वर लुकिंग एट दैट होटल का इमेज, करेक्ट। if it was it a AI generated image, और मुझे तो नहीं लगा, नॉर्मल नॉर्मल इमेजेस फोटोग्राफ, क्लिक किया वैसे नॉर्मल फोटोग्राफ अगर लग मैं रहा था। उधर एक एआई रख दूंगा तो फिर यू विल बाय दैट रूम? मोस्टली 90% ऑफ द टाइम नहीं, मैं व्हाई? मेरा डिसीजन ना होगा, बिकॉज मुझे पता ही व्हाई? नहीं है कि एक्चुअल में वो चीज़ है कहाँ पर या कैसी है। क्योंकि जैसे बिल्डिंग्स के भी कुछ इमेजेस मैंने देखे हैं जो पोस्टर लगते हैं, वहाँ पे एक्चुअल इंप्रेशन लिखा होता है, दूसरा होता है आर्टिस्टिक इंप्रेशन। तो वो कई बार करेक्ट. होता है कि कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कंप्यूटर पे एंड वो दिखा रहे हैं, तो एक्चुअल में बना नहीं है वैसा बिल्डिंग। तो मैं, मेरे दिमाग में कहीं ना एब्सोल्युटली. कहीं बैट ऑफ द टाइम ये रहेगा, शक रहेगा कि वहां पे जाने के बाद सच में वैसा है या नहीं है। या मे भी ऐसा हो सकता है कि लिख कुछ अलग रहा है, वहां पे जाऊंगा तो कुछ अलग ही है। But when your ticket size becomes bigger, when you want to spend on something, you would rather believe a photograph or you rather believe a computer generated image. और फोटोग्राफ, जो एक्चुअल इमेज है शूट किया हुआ, वही मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। So my point of a AI is that if your ticket size is smaller of your product, मतलब अगर you have a product which is could be sold in millions like a phone, उसका मैं AI इमेज जनरेट करके तेरे को बेच सकता हूँ. ओके, ओके। लेकिन होटल रूम का मैं एआई इमेज जनरेट करके तो मुश्किल है. मुश्किल है। And if you go to buy a house and I show you the actual photograph of the house or a computer generated image of the house, will करेक्ट। you buy a house based on a computer generated image? नहीं, वहाँ पे एक्चुअली Because मैं जो वही देखना चाहूंगा मैं। there's a level of trust. You must be spending quite a few lakhs, if not that, करेक्ट, maybe quite a few CR, quite a few एग्जैक्टली, crores to buy that. So you want to see the actual proof. Actual proof, you'll still go and see the site. करेक्ट, Till to convince you, you'll still say, photo तो दिखाओ मुझे, AI देखना नहीं है. राइट, So the राइट, point out here, what happens for me at least is I have to show something real, but at the same time I have to beautify it also. So I can use AIs in manners or in which ways bring out the best in that structure. The reason being is that every day you don't get to see the same lighting in the building. If it's a करेक्ट, rainy day, different राइट, lighting रहेगा. If it's a sunny day, different lighting रहेगा. Evening में करेक्ट, ज़्यादा clouds आ गए, different lighting रहेगा. Evening में clouds ही नहीं आए, different lighting रहेगा. या सन करेक्ट, जिधर सेट हो रहा है उधर क्लाउड आ गए तो बिल्डिंग नहीं गिरेगा. So there are a lot एग्जैक्टली, of variable factors, especially when it comes to weather. करेक्ट, राइट, And now, if you tell me that I have to show the hotel building in the best possible light, and I'm only there for 5 days, I knew it for a fact that it's impossible for me to get the best light. I mean, 2 months after the shoot, I'll get a beautiful sunset out there, but I'm not there to capture it. So what's the point? एग्जैक्टली, So what happens with us is, at least in architecture, you want to see the real product, which could be the building, which could be the room. But the variable factor like weather, that करेक्ट, can be AI generated for me. ओके, ओके। सो स्काई Okay. हो गया, अगर बीच है स्काई तो बीच हो गया। स्काई हो गया, बीच हो गया, ट्रीज हो गए, करेक्ट। समथिंग एक्चुअल विच आर वेरी बिल्डिंग जो है वही रखेंगे हम लोग, बाकी के जो absolutely. Why सप्लीमेंट will I वाले replace सब्जेक्ट है वो। करेक्ट। to make the to beautify the subject? Now it's the same thing. Think of AI like a makeup.
If your skin एग्जैक्टली, is good, the makeup will fall nicely. But if your skin is bad, मेकअप there's भी only खराब so हो much जाएगा. makeup can do. Or you can really process it, or you can really hire an expensive makeup artist and get your skin correct. करेक्ट, So करेक्ट, yeah, I use it like, more like a makeup का एग्जैक्टली. के पीछे. सो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर, सॉरी, जो आर्किटेक्चर फील्ड है उसमें आपने आपका ना पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया, जो बेसिकली बाकी के जैसे If आपने you बताया want, I can छोटे show you one टिपिकल है. image. If you want, श्योर. I can show you one image. I'll just have to share my screen. You can see the image on the screen. Yes, I can see the image. Okay. So this is the final image, the one for Blue Diamond. Now, if I zoom in, ओके. you can see the details and resolutions haven't cracked because it's a pano. करेक्ट, करेक्ट. जो आपने कहा था बहुत ज्यादा मेगापिक्सल्स की इमेज थी, तो बेसिकली Exactly. वो I can इमेज see है ये. all the blemishes, everything what is wrong with the building out here. Now, this is not the करेक्ट. final edited file. Edited file में ये भी पूरा clean हो जाता है. एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत सारे ना, हर एक ना पर्टिकुलर जो बालकनी वहाँ पे है तो वो पूरा क्लीन करना पड़ता है. Absolutely. But you can make out that details are there. Now, यस, यस. this is a semi-process file. That's why I thought I'll show it around. Now, to ओके. begin with, I'm shooting the hotel and this is what I see. ओके, ये रॉ फाइल थी जो आपने शूट किया था. This is as shot, literally as shot. That's why the file name is also out here written as neutral. So ओके, ओके. first thing is okay. Abhi, I've got a good angle. I also know that they're paying me for this image, but the weather is not cooperating with me. What do I do? एग्जैक्टली. करेक्ट. So here I'm in a stuck. That can I change my building? No, but can I change my sky? Yes, I can. यस, आई कैन. So I can give prompts in such a way that it will only change the sky. ओके, ओके. इधर मैंने sky AI generate कर दिया. Now this took me quite a few tries because you notice if I switch this layer off, के जो reflections है, करेक्ट. these are the original reflections of gray sky. यस. So I had to give a command saying that change the sky reflection, including reflections on the glass wall, तो वो which एआई gave me. पूरा रिफ्लेक्शंस भी चेंज कर देगा. But the problem was AI is not accurate. राइट. ओके. If you see, so AI का जो accurate part है मैंने only इधर से लिया है. ओके, ओके. So imagine when I start my this thing, I have another duplicate copy of this. उसके ऊपर पूरा टेस्ट वेस्ट कर दिया. Multiple, not this guy, that guy, this guy, that guy बोल बोल के टेस्ट कर दिया. Then करेक्ट. finally what AI result gave me was this, but it wasn't accurate because ये इधर reflections properly आ रहे नहीं थे. राइट. ओके. ओवरलैप हो रहे थे, बिल्डिंग के ऊपर भी गिर रहे थे रिफ्लेक्शन. सो मैंने खाली स्काई का पार्ट और ये पार्ट मैंने कट करके ओरिजिनल लेयर पे डाल दिया. ओके. फाइन. सो खाली मेरा ये एआई जनरेटेड पार्ट है, बाकी सब ओरिजिनल ही है. करेक्ट. जो रिफ्लेक्शन एंड स्काई आपका जो है वो एआई जनरेटेड है. रिफ्लेक्शंस बाकी ऑन द पूरी बिल्डिंग इमेज ग्लास ओरिजिनल. एंड द स्काई आर रियल, मतलब एआई जनरेटेड. So ओके. now this is where I said, okay, this is where AI can take me there. Now, after this, what you have to do is realize how the colors play into your this thing. So I said, okay, राइट. chalo, I have something of a sky in front of me, which looks nice, which looks good, but it's still not an image which a hotel will look and go and say, wow, what an image type, right? So slowly, करेक्ट. slowly you start thinking, okay, what can I build up on it? I can see the deck chairs out here. Now, these deck chairs को मैंने थोड़ा brighten कर दिया. करेक्ट. Right now I'm saying I'm not even thinking what my end result is going to be. I'm just thinking what I don't like. And what I एग्जैक्टली. don't like has a lot of list. It's बहुत सारी चीजें मेरे को इसमें अच्छा लग रहा नहीं है. करेक्ट. उसमें से एक था ये डेक चेयर्स का. फिर बाद में बोला यार डेक चेयर्स तो ठीक लग रहे हैं, फिर डेक को भी हम लोग ब्राइटन अप कर देते, क्यों नहीं ब्राइटन अप करें. करेक्ट. सो करेक्ट. करते करते मैंने स्लोली स्लोली क्या किया, पहले स्काई को किया मैंने रिप्लेस, राइट. फिर डेक चेयर को ब्राइट किया, फिर बाद में पूरा स्विमिंग पूल का डेक ही ब्राइट कर दिया. Then I said, okay, करेक्ट. pool, let me see what I can do. Now, out here, my thought process is I don't like what it is right now, but can I make it better? I don't know how much better it can be, at करेक्ट. what color it should. So now this is a lot of back and forth experimenting with colors, saying that, okay, for now, I'm okay with this. फाइन. Then फिर थोड़ा color change किया pool का. So, थोड़ा slowly, you start taking one process at a time, what you like, what you don't like. Then there are the करेक्ट. green panels at the back. मैं बोला थोड़ा उसको भी थोड़ा bright कर देते हैं. राइट करते हैं. Now, the first part was AI. The rest all is just your thought process on how you're processing it out. And I can process or extract these details out because uh, this is close to almost 200 megapixel.
एग्जैक्टली। और बिलियन पिक्सल डेटा जो आपने कहा था, बेसिकली उसकी हाँ, वजह से आप इसको जूम आउट करके कट आउट भी कर सकते थे, एंड डेटा करेक्ट। की वजह से सॉफ्टवेयर नाउ को भी रिप्लेस करने के लिए डेटा मिल रहा था। absolutely. So now what happens is then I can make the brighter only the reflections राइट। of the window. फिर ओके। बाद में I said okay everything looks nice but the sky, coming मैच back नहीं to हो my पा old रहा है। thinking when I started shooting photography, I used to look at skies, I used to look at nature, and I हम्म। just felt that this sky looks much better. खाली कलर चेंज किया राइट। है स्काई का, डार्क ब्लू से करेक्ट। इसको ऑरेंज डाला है इसमें. ओके। ओके। So suddenly the look and feel is completely lifted. Its sky is starting to match the building. यस। And then I did a करेक्ट। overall थोड़ा और ब्राइट किया, but I still felt the building wasn't correct. So building पे ये कलर टोन डाला, एग्जैक्टली। golden. अब So करेक्ट। which gave करेक्ट। me the final result of this. करेक्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले एक छोटा सा चेंज को अपने पकड़ा, फिर दूसरी क्या अच्छा लग रहा है, फिर नेक्स्ट क्या अच्छा लग रहा है, I कैसे start रिप्लेस picking किया up, जा I start isolating areas in the image, saying that what I like, what I don't like. सकता है। And slowly you build up from there. करेक्ट। करेक्ट। So I can एग्जैक्टली। divide my images into multiple areas and say ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है. And once this division is complete in my head, what I can do is and I can start thinking that अच्छा ये evening time में क्या colors आने चाहिए sky में जो अच्छा लगेगा. करेक्ट, कलर And ये टोन बहुत मेरा ज्यादा प्ले experience के करते हैं। थ्रू आता है. ये मेरा बचपन का एक्सपीरियंस के थ्रू आता है. राइट। राइट। क्योंकि वो आपको तभी के इस पूरे साल मैंने खाली कलर लाइटिंग सनसेट्स समझी। देखे तो किधर ना किधर बैठ जाता है दिमाग में. एग्जैक्टली सर। तो बेसिकली So आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एआई है वो आपकी एग्जिस्टिंग ब्यूटी को ऐड ऑन कर रहा है, आपकी जो कला है exactly. उसको बहुत ज्यादा ऐड कर देता AI है। part is only this. If I remove the AI part and I still do the coloring part, I'll still get something like this. करेक्ट। बट बिकॉज So ऑफ द एआई है वो is आपको the और ज्यादा building ब्यूटीफाई looking करने के beautiful? लिए हेल्प कर रहा है। Exactly. So is the building looking beautiful right now? Yes, it's looking beautiful, but लेकिन वो last minute punch नहीं आ रहा है या last minute करेक्ट। drama नहीं आ रहा है या last minute you know that it's a very flat shot. एग्जैक्टली फ्लैट। Flat because the sky is flat. I just replace the sky and everything looks falls in place. करेक्ट। So this part is done by AI. कूल। एंड उसके साथ साथ जैसे अभी आपने इसको पोस्ट प्रोडक्शन कर दिया, एंड उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल पे भी होता है, क्योंकि अब आपको आपकी स्किल्स प्लस एआई दोनों हेल्प कर रहे हैं आपके काम को बहुत अच्छा Absolutely. बनाने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को जो म्यूट मीट है, बिकॉज बहुत सारा जैसे नए नए ये चीजें आ रही है तो लोग डरे हुए भी है कि मेरा पूरा का पूरा जो काम है वो रिप्लेस करके लेके जाएंगे, जो बेसिक एडिटर से फॉर एग्जांपल सी वाइट बैकग्राउंड Uh, कट आउट करना, या फिर ना थोड़ा सा ग्लो देना, जो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट शूट्स में ज्यादातर किया जाता है, क्वांटिटी AI वाला will काम। replace. I feel the यस AI सर। will replace them because the product size is so small and the product is so repetitive. एग्जैक्टली। Can you ask an AI to generate this building? मोस्टली तो नहीं 20 कर सकता। करेक्ट, it will be लिमिटेशंस आ very जाएंगे। difficult for AI to this thing. So very generic stuff AI will replace. Very specific ओके। stuff you will still have to do it yourself. So it's your करेक्ट। product which करेक्ट। will decide whether AI will replace you or not. Now, if you tell me that e-commerce का website है and you want one earring का photo या mobile का photo, करेक्ट। are fairly mass-produced products. राइट। If I have a phone which is OnePlus, whatever, same OnePlus, you have it, both the phones will be the same. It has to be the same. Unless I've करेक्ट। damaged it or damaged it. एग्जैक्टली। This product itself is repetitive in such a way. So out there, people will definitely go to AI because एक ही product है. But out here in architecture, your product is changing. करेक्ट। And moreover, your product is of a very high value. करेक्ट। एग्जैक्टली। So if you're spending a very high value for it, you would definitely like to see a picture of it before you see it in your hand or before you see it by eyes. So एग्जैक्टली। cases like those, AI will find a very difficult entry because we already have image render. If you ask any of the architects, uh, they get the site render. They can do ओके। the VR stuff and everything. But at the end of the day, client will say, दिखता कैसा है? मेरे को तेरा actual size का photograph बताना. करेक्ट, एक्चुअल जो बिल्डिंग है उसका Coming back, फोटोग्राफ बताना। coming back to the same point of view, booking a hotel room. Now, hotel room is in few thousands. यस। Out there also, you still like to believe a photograph. Now एग्जैक्टली। imagine if you're spending, the ticket size becomes bigger and bigger and bigger. You start spending more and more money. You will be less reliant on computer because the trust factor is missing. करेक्ट, एंड वो ट्रस्ट फैक्टर वहां पर नहीं आ सकता।
Exactly. Now, have I cheated? Yes, I have cheated. But what have I cheated? I've just generated a sky. That means everything else other than that is real. करेक्ट, So you will believe me एग्जैक्टली, that this is the actual photograph? Yes. If the sky is like this, I'll get a photograph like this. Yes, I will. करेक्ट, जो But at the time of लिमिटेशन थी shooting, उसको आपने ओवरकम कर दिया। yeah. So but at the time of shooting, this is the light I got. करेक्ट, So after the client has decided to pay you your fees, can I be करेक्ट, short charging them? And can I say that नहीं सर अभी पता नहीं कब आएगा लेकिन मैं रोज एक दिन आके ये देखते रहूंगा और फिर अच्छा फोटो लूंगा. वो I भी can't do पॉसिबल that. नहीं है। I can't do that. This day the hotel must be full. इनसे अभी नहीं कर सकते हो. लाइट अच्छा है लेकिन अभी नहीं कर सकते तो क्या करोगे तुम? एग्जैक्टली, एंड सिर्फ वहाँ पे लाइट नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है जो लिमिटेशंस लाते हैं आपके शूटिंग में। Absolutely. So keeping these things in mind, AI helps me out to get the scenery what I want or get the image what I want. Now ओके, I get a feeling it will swallow up a lot of small budget products. करेक्ट, Or ओके, AI can help you out in, say, you're designing a shoot. So, say, I want to see how does one actor looks like in an old age format sitting in a sarkari office. It will generate that image and show जनरेट, you a look. करेक्ट, बट एक्चुअल एक्टिंग But करते वो will ओरिजिनल that एक्टर be को ही will आना you पड़ेगा। use that as a final image? नहीं, Because if you're करेक्ट, paying that actor, you might as well shoot, right? एग्जैक्टली, And have things everything under your control. AI might do a better job, or you can use AI as a reference to say that ये AI ने अच्छा job किया हम लोग को replicate करना है. Makes my life easy. एग्जैक्टली। So my point is, all those guys who are complaining about AI will take their job. That means they बेसिकली haven't. उनके रिपीटेटिव Yeah, टास्क है, इन शॉर्ट अगर वो जो it's a काम कर रहे हैं। repetitive task which AI is going to take over. करेक्ट, ओके, And at least for now, I don't see AI taking over architecture in terms of it will be involved in it. It can take over, but at the end of the day, think about your human psychic will decide that how you use your AI. यस, So एग्जैक्टली, I I'm not scared of it, but I think more of it like a extra makeup layer I can add to my images. Now I'll show you one more image. You'll get a probably you'll get a little idea. Uh, Not the best one, but okay. I'll show you a low resolution one. ओके, Now something like this, what you see on screen, यस, something like this. Now I don't have. If you want, I can show you the layered file. The scenery out here is AI generated. ओके, करेक्ट, So there were a lot of buildings out here. I took another shot. There were a lot of buildings out here. I just said, give me a green cover top on the building. It gave me ओके, different options. कोई कोई में ज्यादा दिख रहा था, कोई कोई में कम दिख रहा था. करेक्ट, So I used the AI and then I said, okay, I like this greenery out here. Can you give me a clean blue sky, clear blue skies with clouds in it? It gave me different options. करेक्ट, देन So वो am I फिर cheating जनरेट by हुआ। saying that if you stay in this room, you will not see the exact same thing? You will not see the exact same thing, but you will see a green cover. You will see blue skies. करेक्ट, Now out here, if you're spent on a room, I can't tell the AI that generate another bed sheet out here. This is the bed out here. This is what you have in front of you. You have to shoot that. एग्जैक्टली। तो जो चीजें हैं वो तो एज इट इज है, उनको तो चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ जो एक्स्ट्रा एड ऑन करने वाली चीजें हैं वो आपको हेल्प हो रही है। So AI is more like an add-on for me where it makes my life easier. Otherwise, initially I would have to shoot something and recreate it. But AI करेक्ट, gives me an option of recreating multiple things. I might still shoot the original picture and still place the original one. But AI gives me the option of changing the scenery, adding करेक्ट, a few करेक्ट, tricks out. एग्जैक्टली। So एंड it's a उसकी वजह से आपका automatic. ब्यूटीफाई हो रही है आपकी इमेजेस, It बेसिकली helps वो me in सबसे beautification इम्पोर्टेंट। as well. Now you tell me honestly, in a hotel room, can I just tell the AI to say that इधर एक table add कर दो? नहीं, फिर वो अगेन कर मिसमैच सकता चीट हूँ, हो जाएगा। लेकिन will that will be cheating, right? So करेक्ट, out here you have a definition of where you can add AI, where you can't add AI. Why? Because your product करेक्ट, itself is more important than what you need. AI will come in creativity. करेक्ट, Things करेक्ट, you want to create, but you don't have the time to shoot. राइट,
So करेक्ट, you will see a lot of AI come into products. You will see a lot of AI come into something which requires a lot of mass scaling. करेक्ट। मल्टीपल चीजें बार-बार जो की जाती है कई बार वहाँ पे। That जैसे that फॉर that's the time एग्जांपल you will lose. E-commerce प्रोडक्ट्स पकड़ लो, कोई भी ई-कॉमर्स, अभी Amazon को करेक्ट, बोला है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, पुट इट ऑन अ डिफरेंट करेक्ट, बैकग्राउंड, एग्जैक्टली। it will help create more backgrounds, or put on a, or you can even create a background, say in the middle of a pool my product is standing, or water splashing over my product. So the point is, how do you use AI? करेक्ट So एंड अगेन। ultimately it's your product, and around it what AI generation you do. करेक्ट, Okay, ओके, now in this case my entire product is the frame, what you see on करेक्ट। screen, एंटायर फ्रेम इज अ प्रोडक्ट, राइट? apart from the scenery out there, which is the back. करेक्ट, करेक्ट, In this frame, my product size is little. I'm talking comparatively in frame. My product size is smaller and my sky size is bigger. So I can at बिगर, least replace the sky out here. एग्जैक्टली। सो बेसिकली इन Now शॉर्ट अगर मैं coming कहने के लिए जाऊँ, now see, I'll show you one more example. I don't have the final file out here, but let me see if I can find it. Okay, take for example this image. Okay. Now करेक्ट, in this image, I had the a green kind of a scaffolding out here, which makes it like a privacy brand. Because this ओके, is on a beach, there's a jacuzzi. So some guests must have complained that इधर बहुत लोग आके हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग jacuzzi private enough नहीं है. करेक्ट, So, at the time of shooting, I had a one green kind of a kapda out here, which is kind of acts as a privacy brand. So ओके, in this case, what I had to do was select these areas and tell the AI that in this area fill up beach and fill up the sea and the beach, the sand out here. ओके, It gave me ओके, different options. So this was recreated by AI. This then I went one step ahead. I said, okay, ye composition wise, this is looking too right heavy. करेक्ट, Everything is happening on the right and the center of my frame. I wanted something on the left. Although I had the sun out here, ओके, but sun wasn't this clean cut. ओके, Exposure match नहीं होता है कभी कभी. To get the करेक्ट, jacuzzi right, I have to compromise on the sun, or to get the sun right, I have to compromise on the jacuzzi. करेक्ट, होता है कभी कभी overexpose, एग्जैक्टली। underexpose, right? So then I just told the AI that add a tree and sun coming through it, and sun was actually there. ओके, तो उसने उस प्रकार से अंडरस्टैंड किया एंटायर फ्रेम को भी एंड देन इट क्रिएटेड फॉर यू, राइट? Absolutely. So if you can see the highlight portion of my frame, which is roughly highlighted, this is AI generated. ओके, ओके, So this एंड is AI generated. If you can't make out, then here are the grids. I'll just put in a grid. So you'll करेक्ट, see everything in that grid is AI generated, एग्जैक्टली आई कैन सी, roughly. This राइट, portion of my frame is AI generated. फैंटास्टिक। बट वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओरिजिनल इमेज में कुछ अल्टरेशन हुआ है, क्योंकि एक्चुअल So में आपने this सिर्फ is उसको where I use ब्यूटीफाई AI. किया है। That's how I would like to use AI to beautify it. फैंटास्टिक। सो वो जो मास स्केलिंग पे होने वाले ज्यादातर जो काम है, उनमें अगर आपकी कोई नई क्रिएटिविटी नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर मुश्किल आने वाली है, No, वो it's not समझना about पड़ेगा। creativity. It's about the size of your product or the value of the product, what you're adding. राइट, And how, and is it a one copy or is it multiple copies? अगर multiple copies of that product है तो then definitely they'll use AI because mass scaling होना है उसका. करेक्ट। बट सिंगल अगर ना लेकिन 6 पीस रहेंगे तो वहां पर then डिफिकल्ट they है। will spend on it. Then you'll say, करेक्ट, I want to see the actual thing. And even if it's single, that means the value of that product will be higher. Ticket size करेक्ट, will be higher. राइट, Like for me, this is a single product. You can replicate it, but yes, for now, this jacuzzi, this lawn, this tree, and the sea facing view of this jacuzzi is only one. एग्जैक्टली, You can have similar like this, you can have different sets of jacuzzi like this, but for this makes it a single piece product, na single product. करेक्ट, सिंगल Then प्रोडक्ट, they'll say, ये unique experience है हमारे hotel का, why don't you come out here, have a look at it and shoot. एग्जैक्टली, So is the sun there? Is the sun actually not there in the photograph? No, sun is there. करेक्ट, Otherwise, you wouldn't have got these shadows properly. एग्जैक्टली। वो जो हाइलाइट्स एंड शैडोज आए हैं वो सन की वजह से ही आए हैं। Exactly. So what will happen is that ये sun अगर आपने sun उधर नहीं रहता था और आपने ये ऐड कर देता था, you wouldn't have got these shadows. करेक्ट, That means
Now, if I add a sun and I don't see shadows on the dark side of the jacuzzi out here, हम्म, that means something is wrong. मतलब sun left hand side से आ रहा है और right hand side में frame में मेरे shadow ही नहीं है. shadow, वो So पूरा का suddenly you पूरा start to see that प्रिंसिपल से गलत हो जाएंगे वहां पे. गलत हो जाता है. And then you like कुछ तो odd है. Now you as a photographer will understand, but a layman will say कुछ तो odd लग रहा है. एग्जैक्टली. करेक्ट. So have I used AI to cheat? Yes, I have, but I wouldn't say cheat, but I would say fine tune the image. करेक्ट, करेक्ट. सो सर, आपने जैसे अभी आपके इमेजेस के बारे में बताया कि आप एआई को जो यूज करते हो वो आपकी इमेजेस को ब्यूटीफाई करने के लिए. लेकिन जहाँ पर Absolutely. बात आती है, जैसे फोटोग्राफी भी एक स्किल सेट है, एंड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर भी आपको जब फोटोग्राफी सिखाई जाती है तो टेक्निकल पार्ट अलग होता है, क्रिएटिव पार्ट अलग होता है. लाइक टेक्निकलिटीज एंड क्रिएटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एन आर्टिस्ट. तो आप भी भारतीय विद्यापीठ में अभी लेक्चर्स लेते हो, वहां पर आप सीनियर लेक्चर्स लेते हो, जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने बेसिक किया है, एडवांस जिनको करना है लाइटिंग के रिलेटेड या अलग अलग जॉनर्स के रिलेटेड. तो आपको क्या लगता है कि टीचिंग का जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, जो आर्ट या फिर फोटोग्राफी टीचिंग का जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, बिकॉज मे बी जैसे मेंटर्स अलग अलग ना, जो स्टूडेंट्स है उनसे कनेक्ट करता रहता हूँ, अलग अलग मेंटर्स से कनेक्ट करता रहता हूँ. तो जो टीचिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में? सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑनलाइन में तो सब कुछ अवेलेबल है, बट व्हाई द मेंटर इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग इन क्रिएटिव एंड टेक्निकल और स्किल सेट वाला जो पार्ट है वहां पे. एंड सेकंड थिंग कि एआई जो आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग बोले कि अब जरूरत ही नहीं है, तो अब एक स्किल सेट वाले टीचर की क्या वैल्यू रह जाएगी? तो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या टेक है? See, now, if you divide teaching into technical and creative, I'll won't divide it into creative, but I'll call it a skill set. ओके, ओके. So it becomes a little easier to comprehend. So the technical aspect, I think, is the start of the video, start of a conversation, I'd mentioned that यस. skill set, or sorry, the camera part, the technical aspect of it, you can master it in 6 months. करेक्ट. There is nothing much to a camera other than an operational tool. Then the second यस. part comes as a skill set. So if you land up playing cricket, technical part would be how to hold a bat, what your stance is. करेक्ट. Skill set is how you react, ओके. how you deliver it. So the skill set part, photo schools, good photo schools will actually give you a lot to practice on skill set. ओके. But the problem arises that the practice what you do is not actually field practice, it's net practice, taking in terms करेक्ट. of cricket. So net practice में आप कितना भी मिस्टेक्स कर सकते हो, कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअल प्रेशर जब ही आता है जब आप फील्ड में खेल रहे हो. And एग्जैक्टली. the matches become bigger and bigger and bigger, your skill set makes more of a value than your technique. करेक्ट. You have you have a technically correct batsman like Sachin, but you have a skillful batsman like a Virendra Sehwag. Things are different. एग्जैक्टली. राइट. So technically, is Rohit Sharma correct? Virat Kohli correct? All those things I can keep giving analyses, but you like a player because of a skill set they have developed. And skill set, at least in sports, is there till you're in your prime, till your body is able to keep it. But in our field, the skill set is developed over a period of years. More you shoot, the more adapt you can recollect saying that last time ऐसे shoot किया था तो ऐसे ऐसे problem आया था ये light में. इस बार वो problem को avoid करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? And this is your experience. This is your skill set. So, now, skill set can only be increased in the field. You can do your net practice in your colleges, improve on it, keep practicing, take yourself through various scenarios. Unfortunately, at least in architecture, your colleges may you can't do much. You have to go outside and shoot when the lighting is not in your control. So to get images correct out of the bat from a photo school, I'll find it still very difficult because you're not field tested. एग्जैक्टली. So either your mentor comes in picture, or if your mentor is taking you for on shoots, that also comes into picture. And how many on shoots have you taken him, that comes into a very big picture. Now if the mentor is taking you for a demo class, it's a different thing, or if a mentor is taking you for a actual एक्चुअल field शूट. assignment, it's a very big different thing. करेक्ट. So how do you acquire the skill set is through practice or through repetition. एग्जैक्टली. So this repetition part, you have to do it yourself as an individual. There is no way I
none of my assistants will land with me for more than 3 years. After that, they will end up doing the things on their own. But for them, 3 years is good enough time for to say that okay, चलो मेरे को समझ गया वो कैसे होता है. एग्जैक्टली. And in today's world, if you see it, if you see someone do once, you feel that I've understood it. करेक्ट. बट ऐसा होता But नहीं कई same बार. thing, but होता नहीं है वैसे. Now imagine this. Now you are training under one of the top cricketers. You see him play a cover drive once. तुम्हें आ गया. देख रहे और वो नहीं आ सकता. देख रहे हैं तो, लेकिन अभी बोल करेक्ट. दिया मैं उसके कवर ड्राइव मार सकता हूँ. नहीं मार सकते. एग्जैक्टली. This point is very fixed in your head, saying that why? Because it's a skill set. But करेक्ट. a training under a mentor, you don't look at it as a skill set. You just look at what technically क्या कर रहा है. That's the missing point. That's the missing link. करेक्ट. करेक्ट. You see your mentor doing the same thing for 3 years, you'll understand इसका fine tune कैसा हाथ बैठा है इस पर. एग्जैक्टली. Similarly, I'm saying 3, you can say 2, you can say 1, you can say 6 months. The more time you spend seeing a master do his craft, the more time you get to study, understand, and replicate it. Point is very clear in my head that if someone comes to join me for a long time, that means I know his seriousness, because you tell me you are starting off in your career. Now, I'm assuming you're at the younger age, in your mid 20s or late 20s. आई एम 20 years old, sir. Okay. So you're starting off in your career in 20s, and then, Correct. then come up to me and say that, you know what, I want to be a photographer. I said, fantastic. And Correct. how long do you intend to be in this profession? That's the next thing which is Yes. running in my head. Now, if you tell me that I want to be a photographer for life, I'm not doing it for 2 3 years. I'm serious about it for Exactly. 3 till I retire. Till Mhm. hopefully I want to retire in this profession if things go according to way I envision it or I see it. Exactly. So to practice your craft, you want to give photography almost 20 to 30 to maybe 40 years. Correct. You think you're going to learn everything in 6 months and walk away? I don't think so. That is the catch. If you want to give something 40 years or 30 years, at least give 1 year of complete dedication to that craft. And it's required basically There is वो no quick जरूरी है fix ये. to it. You tell me you want to be a doctor for the rest of 40 years. How many years doctors do study? 10 to 15 years they study. Exactly. You want to be a photographer, you think you can study under a master for 6 months and become a professional? Yes, you can. But the most of your learnings will happen on field. Right. But given a choice, given a chance, if you do land up assisting someone for longer time, you will see all the pitfalls, all the drawbacks which are happening. And you will get a little bit of a head start or a little bit of a knowledge saying that, okay, if I get an assignment, I'm not going to do it this way. Yes. It's simple logic. Yeah. I mean, you look at the fact that 30 years in a field and you can't give 3 years for learning it. Right. You want और to give वो it वहां six पे six वो months नहीं to learn. पाएंगे ऐसे. एग्जैक्टली तुम्हें 6 मंथ में वो सीखना है और 30 साल उसमें बिताना है, तो तुम्हारा लर्निंग कर्व कितना छोटा रहेगा. Exactly. So if you look at photography from a long term perspective, I always feel that you should assist someone to understand the business aspect of it, the skill aspect of it, and the handling day to day running operations of it. It's not that we photographers are working 24/7. We have a lot of free time. We do a lot of other things also if needed. My favorite hobby is staring at the clouds or staring at my ceiling and lying in bed. I can be as lazy as I want to be. But when I'm not, I am working. And from my own experience, I've assisted for 3 years. Uh, उसके conditions अलग थे, लेकिन जो भी थे, but I told myself that okay, if I want to be in this field for the next 30 years, at least 10% of the time I should at least invest in my own development to see how a Correct. master works. So Exactly. which made me decide, at least I said, okay, I joined Ali when I was 20. So I said, Correct. at least मैं 50 60 तक तो photography करूंगा, तो 30+ years करूंगा, so 10% तो मेरे को Correct. at least concentrate टाइम करना देना पड़ेगा कैसे चाहिए. होता है ये. Yes, technology will improve, but at least base level you understood what the principles he is working on. Yes. While assisting the master, it's understanding his skill set, and second is understanding the principles behind it. Okay. It's not the technique. You have to understand the principles, the main core reasons why he shoots like this. Now, in those principles, how your technology will affect. Right. While shooting, you could say that हम लोग ने सेटअप कर दिया, क्लाउड अच्छा ब्रेक नहीं हुआ, अभी शूट नहीं करेंगे. क्लियर क्लाउड आएगा तो मैं Okay. शूट करूंगा. Correct. लेकिन अगर मेरे को क्लियर क्लाउड से भी अच्छा मिला तो ऑफकोर्स मैं शूट करूंगा. लेकिन वो फर्स्ट, Definitely. अगर मेरा 5 दिन का शूट है, मैं ऑल 5 days में सेटअप करूंगा. आई स्टार्ट विद द
where the natural light is most important, I'll start with that on day one. That's the first shot I'm going to tackle because I Correct. know I have another 4 days to tackle it again. Right. Now, this no one will tell you this on field. Correct. An exterior shot I will never tackle on the last day. Right. But now with I can change this game plan. I can change the Correct. principle because I understand how the lighting happens. So I can say, नहीं चल day 4 में कर देते कोई problem नहीं है. I can, if it doesn't work out, I know I have AI on my back of the hand. I can generate some clouds. I can generate whatever I want. I can clean up the area and do it. But if this wasn't the case, I understood his principle saying that नहीं इसको day 1 पे shoot करना ही पड़ेगा मुझे. नहीं मिला तो day 2 है, Exactly. नहीं मिला तो day 3 है. करेक्ट। So आप बाद में भी what शूट कर सकते AI हो। has exactly. So what AI has done in this case is it's reduced my time. It's Right. reduced my guesswork. That's where AI has helped me. AI has not taken away the job of saying which is the right day to shoot and which is the content you're going to create because content is in front of me in terms of architecture. करेक्ट। Now, this is where AI comes in my professional life. Now, in terms of teaching, people look at the technical aspect of AI saying that इसमें तो सब कुछ हो सकता है. And my job as a teacher to tell you what all things AI is capable of. But at the end of the day, you have to remember AI is a tool. करेक्ट। to कार्विंग करेगा तो हर एक चीज कार्विंग बड़ा हैमर से करेगा, कोई कोई छोटा हैमर से भी करेगा. एग्जैक्टली। You will have different types of hammer, different types of chisel, different types of brushes, करेक्ट। different types of equipment to carve that stone out, right? So यस। AI is going to become a very important tool. What AI has करेक्ट। done for me is remove the guesswork of weather. करेक्ट, आपको बहुत ज्यादा वो फायदा पहुंचा रहा है बेसिकली बहुत बहुत आपके ज्यादा फायदा काम पहुंचा में। because now I know that okay for whatever reasons now you're shooting a hotel, it's not like मैं जो schedule दूंगा hotel will stick to it. Think about it. करेक्ट। Hotel is paying me to shoot. That करेक्ट। means they are my customer. एंड एग्जैक्टली। कस्टमर इज ऑलवेज राइट. एंड होटल के आके इधर कोई कस्टमर आके बोलता है नहीं आज वेडिंग का पार्टी है मेरे को चाहिए, मैं तुमको एक्स वाई जेड मनी दे देता हूँ. होटल इज नॉट करेक्ट। गोइंग टू रिफ्यूज दैट व्हेन आई सॉरी दैट डे आई कांट गिव यू, सम बुकिंग हैज कम अप, आई हैव टू टेक इट. फॉर एग्जैक्टली। होटल व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, अ रेवेन्यू. और रेवेन्यू। तो मैं करेक्ट। उधर के आई कांट थ्रो अ फिट एंड से दैट नहीं तुमने तो प्रॉमिस किया था अभी नहीं हो रहा है. सो दे विल से एग्जैक्टली। लिसन आई हैव पेड यू, आई हैव पेड you for your services, now you have to give me a solution. That's not my problem if the weather is not right. करेक्ट। करेक्ट। Whatever other things can be right by the hotel, they will do it. एग्जैक्टली, जो उनके हाथ में वो कर सकते हैं, जो हाथ में है ही नहीं ना, तो वो कैसे वो अरेंज क्या कर करो. पाएंगे। Like I had done one shot where we set up everything, but there was a dust storm in Vadodara. ओके। Dust storm came and there was food set up. So food के अंदर पूरा dust निकल गया. अभी I couldn't take that shot. There was just not possible to take that shot because it was literally a dust storm. And I looked at them. I'm saying, I'm so sorry, guys. I couldn't take the shot because we weren't fully set up, but the food was laid out. I was still setting up my camera. So they were करेक्ट। like, "Arey, when अभी क्या करें?" They were like, "You'll have to give me this food again." They said, "We will give you. That's not a problem, but I can't give you in the next 45 minutes. It will take me 2 days because of the whole buffet spread and a lot of things करेक्ट। go in." So I couldn't do that shot for 2 days. I was just waiting in the hotel. अभी मैं क्या उनके सर पे चढ़ के नहीं बोल सकता हूँ. They must be नहीं कर having their सकते। own schedules. They must be एग्जैक्टली। saying that okay, because there was so much of food involved in it, they can't say we can't prepare it overnight. एग्जैक्टली, प्रोसेस Even है, if they उनकी भी prepare अपनी it, लिमिटेशन। even if they prepare it, has to be consumed also. So they don't want it to go in waste. So they had to schedule a lot of things for it to करेक्ट। work. And they probably incurred a heavier loss than I did. All I had to do was not यस। shoot. For them, they had to reprocess all those food platters and everything else and clean up of the area. So this is where AI comes in the picture. When I wanted a shot which was supposed to be in the morning, but the clouds weren't good, I still took the shot and replaced the sky. करेक्ट। करेक्ट। So AI sky replacement you'll have in Lumina, you'll have Photoshop, you'll have in many other apps also. So you can choose which one works for you and how it works for you. करेक्ट। करेक्ट, इवन एडोब के भी That's सारे इसमें आ चुका है वो। and in terms of teaching, we can teach the students what AI can do, but they also have to understand where to use it. राइट। So if you, in very basic terms, you teach the students about aperture, shutter, and ISO, they're using it when it's required, right? ये शॉट पे करेक्ट। स्लो शटर स्पीड अच्छा काम करेगा, ये शॉट पे रेयर सिंक अच्छा काम करेगा, ये शॉट में मैं शायद पोलराइजर निकाल के वो रिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ. दिस इज अ स्किल सेट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्किल सेट वो इज ऑन स्किल फील्ड. सेट है। करेक्ट। So वो application of the technical aspect will become your skill set. And how do you करेक्ट। apply the skill set?
makes all the difference as a photographer, because you and I can have the same equipment. Results can be एग्जैक्टली, completely different. करेक्ट। इवन And we एक come up, 10, जी बोलिए। sorry, continue, continue. इवन अगर 10 फोटोग्राफर्स एक जगह पे खड़े हैं सेम कैमरा के साथ में, तभी भी सबके इमेजेस अलग अलग होंगे, बिकॉज देखने का पर्सपेक्टिव हर एक का अलग अलग है। Exactly. So this करेक्ट, is so personal. This is so subjective. And which one do you like? There is no एग्जैक्टली, right answer. There is no wrong answer to it. So how do you use AI? I will always tell my students that, this is what AI is capable of. But in this situation, I'll rely on AI. In this situation, I'll rather rely on real. करेक्ट, करेक्ट, So at least I give them an idea that where you can use, where you can't use, instead of saying use it everywhere. एग्जैक्टली सर। एंड एक चीज मुझे आपको और पूछनी थी कि लाइक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेजेस में जाते हैं, फोटोग्राफी स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे अलग अलग फोटोग्राफी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे इंटरेक्शन होता रहता है। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं उनकी कि हमारे इंस्टीट्यूट में बोला तो ये गया था, एंड वहाँ पर हमको ये रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो फॉल्स कमिटमेंट वगैरह हुई है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव अपना रिव्यू स्टूडेंट से भी मिलते हैं। एंड उसमें से एक पॉइंट मुझे आपको ये पूछना है कि लाइक आपने जैसे बात की गुरु की, एक मेंटर, एक पर्टिकुलर आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो मेंटर की बहुत सारा जरूर है। बट हाउ टू फाइंड अ मेंटर जो एक पर्टिकुलर सही गुरु जिसको बोल सकते हैं, बीच इज अ वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो इसका आंसर आप कैसे दोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अलग First अलग of लोगों से all, पूछा हुआ है। it's if you break it down, it's fairly logical. First, you have ओके, to understand that you're going to give yourself 30 years in this field. करेक्ट, In those 30 years, what do you intend to achieve? Do you want to become into करेक्ट, architecture? Do you want to go into fashion? Do you want to go into products? Do you want to go into lifestyle? Do you want to go into राइट, what are other genres you can think of? करेक्ट, ओके, फाइन, So streamline your thought process, because see, it's like asking, if I tell you that I want to be an athlete, what will ओके। you tell me? तो आपको पहले तो एथलीट के बारे में जितनी Such a vague जानकारी हो। answer. If I tell you I want to be an athlete, it's such a vague question I'm asking. मेरे को athlete बनना है. हम्म, So दिमाग में even you're drawing a blank, because you're saying that athlete तो ठीक है, लेकिन कौन सा ट्रैक एंड फील्ड में, स्पोर्ट्स में, करेक्ट, there are so many fields in सो मैनी athlete. फील्ड से अलग अलग है। You can be in basketball, badminton, sports, करेक्ट, track and field, name it, hurdle, jumps. राइट, You're getting my point, right? So similarly, when somebody comes and tells me I want to be a photographer, I'm like, great, okay, but in what? And that's where the करेक्ट, first major barrier for any students will come in, like, अच्छा photography में तो रहना है, लेकिन क्या करना है photography में? So करेक्ट, first point is, if you don't know what you want, then you have to explore. That means try understand what are the genres of photographies and which करेक्ट, photography would you like to be in, because every genre has its own nuisance, and you can't करेक्ट, think that photography सीख लिया तो मैं सब genre कर सकता हूँ. एग्जैक्टली। हर जॉनर की अपनी अपनी खासियत अलग अलग है। So you ask me to shoot fashion, I'll fail majorly. But if you ask a fashion photographer to shoot what I shoot, he will also fail. एग्जैक्टली, You हर एक can't के स्किल expect सेट a अलग अलग cricketer है। to you can't expect a cricketer to beat a swimmer. So you can't expect a swimmer to run like a cricketer. So know what genre you want to get into. So that means you have to first study all whatever genres are available to you. Which genre do you want to get into you? And in that genre, it's very easy to find the master. With today's social media, internet around you, करेक्ट, definitely find राइट, which is the master you want. So the biggest question any of the students will ask, like, मेरे को photography करना है, लेकिन उसमें क्या करना है? So if you can करेक्ट, find your genre in which photography you want to do, then things become easier. करेक्ट, करेक्ट। सो Now, आपके everybody हिसाब may से, not like art. जी जी, Everybody may not like fashion, but राइट, you should ask yourself that question: that what is the genre of photography you want to be in? करेक्ट, Forget the money aspect of it. How to make money out of the genre? That's another step एग्जैक्टली, that your mentor can tell you. करेक्ट। लेकिन अगर उन्होंने, उनके मेंटर ने, जो भी बेसिकली स्टूडेंट है, उनके मेंटर ने एक्चुअल में वो अचीव किया है तो डेफिनेटली आपको बता पाएंगे। सो एक सही मेंटर को फाइंड आउट करने का तरीका, जैसे आपने बताया, पहले तो आपको क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या करना है। उसके बाद में उस पर्टिकुलर लेवल पे जब एक बार बेंचमार्क हमने सेट कर दिया कि मुझे फैशन फोटोग्राफर बनना है, तो फैशन में भी कौन कौन से मेंटर्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन चालू होगी, मतलब उनकी जो रिसर्चिंग चालू होगी। Absolutely. देन आप Absolutely. जाके वहां पर अप्लाई कर सकते हो कि चलिए You ये can सर हैं approach जो them, बेसिकली ask अप्रोच कर them. सकते हैं। Absolutely. अब ये अपने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताया कि एक स्टूडेंट को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। अब अगर मान के चलिए कि एक मेंटर है जो एक फोटोग्राफी सिखाने वाले टीचर वगैरह है, तो एक Hmm. सही गुरु, एक सही मायने में जो गुरु होते हैं,
उनकी व्याख्या क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी तो ऐसा हुआ है कि पहले कैसे तो एजुकेशन जो है वो इतना कमर्शियलाइज नहीं हुआ था, स्किल सेट। और आज तो ऐसा है कि हर जगह पे आपको पहले पैसा दीजिए, उसके बाद में स्किल्स, स्किल्स भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे नहीं, बट पहले धंधा तो वो पूरा का पूरा एजुकेशन का बन चुका है। तो आई अगर सही गुरु अंडरस्टैंड, की बात करें तो आपकी व्याख्या क्या है उसके रिलेटेड? सी, I I'm telling you very honestly, if I teach, I'm only teaching architecture. I'm not teaching anything else. So if students are interested in my class, it's only because of architecture. And beyond that, they're free to do what they want. So if you're looking for a mentor, it's of paramount importance to know what field you in photography do you want to go. It doesn't mean that if you're considering architecture, you can't consider fashion. You can do that. You can assist one photographer, finish your intern, and then join another photographer. That's not करेक्ट। stopping you. That means you can give 1.5 years to one photographer, another 1.5 years for one photographer, or two, whichever way you deem fit. यस। But please understand, 40 years, 4 years, 10% invest, 10% करेक्ट। invest. It's not much. एग्जैक्टली। It's not much. So you, whichever way you look at it. Now, if you have a mentor, which is a generic mentor in the sense who's just going to teach you what's the basics of cameras and basics of photography, that mentor will not give you a very specific advice when it comes to a particular genre. Take for example, if I was only teaching basics of photography and I didn't know anything about architecture photography, I don't do architecture photography, I'll end up doing fashion photography. I can only give him inputs on related to fashion. But एग्जैक्टली। if he comes with a technical doubt for architecture, I'll fall flatter. I'll say, ha, aise kar le. I can't give him a specific advice. I can give him a generic advice. करेक्ट। When you're looking at specialization, ask for specific advice from the genres ka स्पेशलाइज। master. करेक्ट। So in the start, when you're looking at, you must be getting students who are generally interested in photography. Now, in general interest in photography, I would consider them as, yes, I want to become athletic. I want to be an athlete. उसमें से कोई आगे बोलता है मैं वो क्रिकेट करना है तो क्रिकेट क्रिकेट क्लब के पास भेजो. करेक्ट। So depends where your teacher is and what state of your teacher is. What's his skill set? If your teacher is specializing in architecture, in case that's where I come for BBSP, I will only give them architecture related advice. And if they ask me for anything else, I'll say, you ask that sir. He's into fashion. He'll be able to better guide you एग्जैक्टली। through that process. So करेक्ट। that's where if you have a mentor who's very generic, will not be able to give you the right advice to the kids. And that's the problem the kids will face, saying that, I took his advice seriously, but it's not happening करेक्ट। because he asked advice for a very specific field, which your mentor may not be. इन If शॉर्ट any of अगर my जनरल फिजिशियंस और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की अगर बात करें हम लोग तो absolutely डेफिनेटली। जीपी के पास जाओगे तो आप वो बोलेगा ठीक है ये हार्ट सर्जन को बताओ, करेक्ट। लेकिन जीपी के पास अगर हार्ट का स्पेसिफिक राइट। केस लेके जाओगे तो एटलीस्ट जीपी करेक्ट। विल टेल यू नो, ही विल आंसर इट, आई विल नॉट आंसर इट. एग्जैक्टली। But out here, your general GP is your जीपी। mentor and he's answering it. He's not going to give you a good advice. करेक्ट। May, करेक्ट। may not be a good advice. There's a little doubt, which the एग्जैक्टली। students are not able to understand, which the teachers themselves are not able to understand because they may be lacking in particular genre. I'm lacking in everything other than architecture. I'm lacking in it. I agree to it. करेक्ट। I can help you to a certain point, but beyond a certain point, I'll say, listen, this is not in my realm. I may not be able to answer that clearly. Why don't you करेक्ट। speak to expert person and get this specific doubt clear? करेक्ट। करेक्ट। सो अभी जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सही मेंटर के साथ आप असिस्ट करो, उनको समझो, एंड देन वो You उसके said अलावा the जो है words yourself. You said the words yourself. सही mentor, सही मेंटर्स। right? तो सही एग्जैक्टली। mentor, तो everything you started with the saying ना सही mentor होना चाहिए. तो सही mentor क्या होता है आपका? एग्जैक्टली। स्पेसिफिक जॉनर का मास्टर. करेक्ट, जिसने एक्चुअल में वो And सारी उसको चीजें की है वही खुद। जॉनर का क्वेश्चन पूछोगे तो ही आंसर मिलेगा सर आपको. मिलेगा आपको। राइट सर। सो अब जैसे आपने बताया था कि बेसिकली फोटोग्राफी तो एक आर्ट हो गया, लाइफ के अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं क्योंकि लाइफ अगेन एक कैनवस है हमारा। तो आप बेसिकली एक नॉर्मल जो जनरल अभी जो आने वाले बच्चे हैं या आने वाले लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, कभी किसी के दिमाग में आया, दिल में आया कि चलो मुझे फोटोग्राफी करनी है, कोई भी आर्ट के रिलेटेड फील्ड में जाना है, हम्म. लेकिन एक बेटर इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आपका एक खुद का कैरेक्टर भी मैटर करता है कि अगर मान के चले आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपका कैरेक्टर जो है वो बेसिकली आपके खुद के प्रिंसिपल्स हिले हुए हैं, खुद के एथिक्स हिले हुए हैं, तो वहां पर डिफिकल्टीज आ सकती है। तो आपके हिसाब से आप एक एडवाइसेस कौन कौन से एडवाइसेस आप देना चाहोगे
जो देख एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एज अ फोटोग्राफर भी, एज अ कि कोई अगर स्टूडेंट है उनके लिए, कोई अगर टीचर्स है उनके लिए। तो बेसिकली आप क्या कहोगे, जो भी आपका लाइफ का तजुर्बा है अभी, उसके बारे में I'll क्या just कहोगे? simply say, be humble, be nice. At the same time, don't stop learning. You will always be inquisitive. Don't be afraid to ask questions, even in front of your client. Because Correct. understand one thing, I know my photography, but I don't know my client's business. So more questions I ask, the Correct. more ideas the clients will give in my head. Correct. Simple example, very often it happens if I walking with a client in a hotel and I'll say, "Acha, ये area looks nice, लेकिन आप use किसके लिए करते हैं?" So he'll say, "No, this is a banquet given out for weddings. This is a restaurant." But Correct. that is my favorite spot because a lot of people sit out there. You get a nice view. So when he says something like that, I मतलब मेरे को वो एरिया का एक फोटो लेना है. अभी कैसे दिखा Correct. सकता हूँ वो मेरे दिमाग में आता है. So Correct. what happens is if you ask a lot of questions and if you're humble and you are not too rude, people open up to you. They will give you indirect hints to generate better images. And Exactly. more often than not, you have to understand that we are from a profession where, for us, uh, photography is not very important for a client. If you get this fact in your head, it's not essential. Their business will survive without you, but their business can Correct. improve if you're around. Exactly. So that means I cannot force myself on the client. If one thing the pandemic has taught, that the first thing what took hit was the media businesses. Correct. Essentials were always there. So client will always first survive on essentials, then look out for the Correct. ancillary service. So we come under Exactly. ancillary services. So coming under ancillary services, I can't be rude to a client because if I am rude, I know that he'll say that, "Chal, ek do Correct. acha photos, I don't have to deal with him." Exactly. Technically, it's the client who's paying me. So that means I have to be nice to him. If Correct. you don't, if it's not in your nature to be nice, if you halbadi rehta hai tumhare dimag mein, if you it's not in your nature to be nice, then get one fact right that he's paying you. So he is your client. So better be nice to him and service him. We Correct. give him an image. But if generally you're nicer and easygoing and Mhm. attitude to learn, clients themselves will open up to you and the flow of idea becomes almost intuitive. Rudeness will not get you anywhere because you're just one small cog in this big entertainment industry. You're not a company. A company can be, be company can afford to be rude. An individual, if he's rude, it hurts you. एंड हमारे इसमें ज़्यादातर इमोशंस ही बहुत ज़्यादा कन्वे किए जाते हैं, डेफिनेटली। Absolutely, and there's a hard part of it. The corporate's profit will hit your personal gains. That's a sad part of it. I mean, big company can ask you for discount, so that's a corporate discount they're asking for you. But at the end of the day, it hurts an individual, and you have to suck it up on it. Like corporates will say that I want a discount, but that's a corporate discount for them, but it's an individual hit on my own एग्जैक्टली। pocket. It hits you, but after that, you still smile and say, "Okay, sir, काम तो कर देते हैं." करेक्ट। करेक्ट। And if you do a good job, they'll call you again. So करेक्ट। you have to find your ways to generate your revenue stream. Do more work or give less discounts. But if you want to give एग्जैक्टली। less discounts, then better be good at your work and better be very करेक्ट। करेक्ट। presentable and be generally sweet to the client. So that client, when I go to a shoot, they shouldn't be harassed. अरे विनय आ गया shoot के लिए. They should be करेक्ट। happy that विनय आ गया shoot के लिए, it will go smoothly even if I create a problem because करेक्ट। I'm करेक्ट। paid to find solutions for them. एग्जैक्टली। वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो जो रिस्पेक्ट है, या फिर वो जो पूरा का पूरा, उनको भी चिंता नहीं है कि आप अगर गए हो तो अभी काम को लेकर उनको चिंता नहीं है, उनको Absolutely. पता है कि काम That अच्छी is more तरीके से हो important. जाएगा। So at the end करेक्ट। of the day, more bigger your business grows, it's more about your word or your trust the client puts in you. Uh, Now I have my clients; they don't even look at my portfolio. They just call and say, "You know what? When I just come down and we need this to be shot." Initially, while doing business, initially for the first time with any new clients, you'll generally have something known as a scope of work (SOW), करेक्ट। in which we'll decide that okay, you want 2 images of the bedroom, 5 images of the lobby, करेक्ट। or whatever. That number is decided through various meetings, and they give you SOW. Based on that, your quotations are made. Based on that, your करेक्ट। costing and everything is made and given to them. Uh, by God's grace, touchwood, it's been almost more than 2 years where I have not created an SOW. They just call and say, "When I aja, ye area shoot karna," and I said, "Okay, let's go."
That's करेक्ट, the level of trust they have. They understand I don't need that paperwork when I aa jayega. एग्जैक्टली, And then when I reach out there, I do the shots and then मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एक दो निकालने हैं. Then there have been few instances where I thought, okay, चार पांच रहेगा. I came out with a bank of 30 and they took all of those 30. करेक्ट, I was करेक्ट, like, यार तुम लोग ने पहले क्यों नहीं बोला? नहीं यार, अच्छे इमेजेस लग रहे थे, ले लिया हम लोग ने. So even they didn't have an idea, but they trusted that okay, he can do something. So करेक्ट, somewhere down the करेक्ट, line, I tell sir, ये अच्छा लग रहा है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, आपको अच्छा लगा तो बोलो. परफेक्ट, करेक्ट, But if you're rude to them, they'll say, दो बोला है ना, दो ले लिया, चल अभी निकल. एग्जैक्टली। वो सबसे So इम्पोर्टेंट है बेसिकली, it, आपको हम्बलनेस बहुत आगे तक लेके जाती है, आप जितना, it वो takes कहते हैं your ना। head. I'll give you that. It takes your head and it doesn't hurt them also. Because trust me, your clients are more worried about their revenue stream, how they're going to spend that money, and how they're going to justify your cost to the एग्जैक्टली, organization. So the last thing you want is to fight with the guys who are you employed with you. करेक्ट, How उनको would you like जाता to है deal with a good shopkeeper? Will you go buy वेल, products from him? You'll say, यार ये तो छोड़ना यार, ये तो उल्टा सीधा जवाब देता है, मैं उसके पास ही जाता हूँ. लेकिन उसके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन इसके पास भी अच्छे हैं, तो देन you'll say उसको भूल जा. एग्जैक्टली, करेक्ट, So if I have a ruder winner and I have a politer winner and both the work is same, chances are the politer winner will get more work than the मोर ruder वर्क, one. एग्जैक्टली। सो करेक्ट, जैसे आपने कहा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सच में अगर कुछ पता है, तो उसको ये भी पता है कि उसको कुछ नहीं पता है। जितना ज्यादा आप इन ओशन में अगर जाने वाले, तो आपको पता रह जाता है कि जितना नॉलेज आपका ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा आप हम्बल होते जाते हो। Absolutely. I mean, there are in our field we find more problems than solutions. यस, And once we find a solution, we implement that, and again we find more problems. करेक्ट, करेक्ट, We used to have the problem before AI of sky replacement. There were techniques in Photoshop which weren't very refined, but now AI has made it do a lot more एग्जैक्टली, refinement on it. So again, it's used as a tool, not used as a करेक्ट, tool for finishing, but that's not एग्जैक्टली, made my entire image. करेक्ट, So your end vision, all these tools are helping me. Like coming back to the start, I told you I took almost 4 years to get a good frame, to get an ये, acceptable frame printed. करेक्ट, Now that time duration is less than 4 weeks. एग्जैक्टली, So बहुत ही I ज्यादा। mean, I should be saying that okay, I'm born in the wrong era. Or maybe I should be करेक्ट, saying that, if I was born in this era, I probably wouldn't have taken up photography. करेक्ट, बिकॉज दौर पे मैटर करता है किस, अभी जैसे बहुत सारे जो अभी नए बच्चे आए, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। शायद अभी हम लोगों को लग रहा है, मे बी आने वाले 10 सालों के बाद में और भी अलग अपॉर्चुनिटीज होंगी जो आज के हिसाब से हैं, वैसा। तो अब जाते Absolutely. जाते I अभी think the आप, kids born in this generation or the guys who are planning to take up photography in this generation, your learning time has become so compressed and so small that you guys can actually concentrate more on your skill set, which is lacking in today's generation photographers, at least the newer ones. All the skill ones are the pretty old guys. ओके, करेक्ट, करेक्ट, So if the newer generation can practice more on the skill set rather than saying मेरे पास ये कैमरा है या मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, at the end of the day you are selling an image. क्लाइंट करेक्ट, को कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुमने एआई यूज किया है या नहीं किया है. एग्जैक्टली। तो सर अभी जाते जाते आप एक बेसिकली शॉर्ट क्या गाइडेंस करना चाहोगे, जो भी पॉडकास्ट में देखने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स या सारे लोग, उनको उनको क्या, आपका बेसिकली क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जो आपने अब तक पूरे कन्वर्सेशन को अगर सम अप करे तो। Skill set is way more important than theory, and the best camera you have is currently in your bag. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। Camera after a certain time will not matter at all. You already have your best camera, and please practice on your skill set. यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर अपने टाइम जो दिया इसके लिए। एंड डेफिनेटली ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जो भी इस पॉडकास्ट को देखने वाले उन लोगों के लिए। एंड उसके साथ साथ आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आपका कीमती समय हम लोगों को दिया। सो डेफिनेटली गाइज, हम It लोग was a अपने pleasure साइड से talking to अगेन you. कंटिन्यू करते रहेंगे। I hope so. I'll see you soon. श्योर श्योर Okay. सर, थैंक यू सो मच सर। Okay. चलिए. I'll see you around.